So namaskar all of you. तो आज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस रो ओडिशा सिविल सर्विस रो किछटा सॉल्व करिवा. एटा हला लास्ट ईयर रो क्वेश्चन 2022 रो पेपर 1 रो. तो पैटर्न टा यूपीएससी टाइप रो करिया पे चेष्टा करछि ओपीएससी और मोर लेस सेमती ही अछि टिके खाली वेरिएशंस किछटा अछि. तो हमें केमिति अपीयर करिवा कि केमिति हमें आंसर टा को अप्रोच करिवा जेमति कि हमको मैक्सिमम मार्क्स टा मिल पारि. ओके सो आज हमें स्ट्रक्चर ऑफ पेपर 1 2022 रो सेटा देखिबा. तापरे तारा कोन क्वेश्चंस देछि फर्स्ट ग्रुप रे ग्रुप ए रे जोडा कि 20 मार्कर क्वेश्चन ओडा थिला पांचटी क्वेश्चन. तो स्ट्रक्चर 2022 पेपर 1 रे ओपीएससी एमती देथिला कि से दीटा ग्रुप्स रे आपनकर क्वेश्चंस को डिवाइड करथिला. ओके ओपीएससी रे यूपीएससी रे जेमती आपनकर 150 आउ 250 वर्ड्स रो 10 और 15 मार्क्स रो डिवीजन थाए सेही टाइप रो. बट एटी टिके डिफरेंस थिला कोन ना जो ग्रुप ए क्वेश्चन जोडा देथिला एटा 300 वर्ड्स में देथिला मैक्सिमम 300 वर्ड लिमिट तार थिला. आउ जोटा ग्रुप बी रे देथिला सेटा 250 वर्ड लिमिट रे देथिला. ओके सो जोटा कि पांचटा क्वेश्चन देथिला ग्रुप ए रे सेटा 20 मार्क क्वेश्चन थिला. तो 100 मार्क्स सेठी आपनकर आसी गला. आउ बाकी 10 मार्क्स क्वेश्चन किछि नथिला. बाकी जो 10टा क्वेश्चन ग्रुप बी रु थिला सेटा 15 मार्कर्स थिला. ठीक अछि. सो बट लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ओपन एंडेड आउ यूपीएससी टाइप रो थिला. एटलीस्ट चेष्टा तो थिला कि एमती यूपीएससी टाइप रो क्वेश्चन ओडा दिया जाऊ. ओके सो हमें आज ग्रुप ए टा डिस्कस करिबा जो पांचटा क्वेश्चन 300 वर्ड लिमिट रे. ओके आउ आपनकर 20 मार्क्स पे. ओके तो एथरे गोटे जिंस हम खाली माइंड रे रखिबार अछि कि जदि से मते 300 वर्ड लिमिट देछि ताले समय मु केमति बात करिवि. सो एटा 250 मार्क्स रो पेपर टा आउ 180 मिनिट्स. तेनु गोटे मार्क पई केते मिनिट्स मते दबार अछि मते कैलकुलेट करियार अछि. तेनु सेही हिसाब रे 20 मार्क जोडा कि ग्रुप ए रो सब क्वेश्चन रो 20 मार्क्स. तो हमें जदि हमें ताको कैलकुलेट करिबा ताले हमको अराउंड 14 मिनिट्स मिलुछि. ओके अराउंड 14 मिनिट्स मिलुछि. आउ नॉर्मल स्पीड सिविल सर्विस एग्जाम पई आपन को लिखिबार इज समवेयर अराउंड 20 टू 25 वर्ड्स पर मिनिट. ओके तो आपन जतले प्रैक्टिस भी करिवे एटा देखिबे आपन को एई स्पीड टच करचंती कि नाही 20 टू 25 वर्ड्स पर मिनिट. आटू कम हेले डिफिकल्ट होबो प्रॉपर्ली आंसर सुडा लिखिबा. ओके सो लेट अस स्टार्ट देन कोन क्वेश्चंस थिला आउ केमती हमको अप्रोच करिवार अछि. तो जेतोले आपन क्वेश्चन टा मिलुची फर्स्ट अंडरलाइन द इंडिकेटिव वर्ड्स किंबा जोटा कि आपनकर इंस्ट्रक्शंस अछि. ओके आउ कोन को एस्पेक्ट उडा आपन कवर करिया पे पड़िबो. केबे केबे कोन होय ना गोटे क्वेश्चन रो 3-4टा रिक्वायरमेंट थाए कि 3-4टा जिंस से पचार थाए स्पेशली जो 15 मार्क की 20 मार्क क्वेश्चन उडा. तो सेतरे हमें गोटे की दीटा पार्ट कवर कर दो. ओके तापर आउ गोटे पार्ट छाड़ दो. तो सेति पई क्वेश्चन पेपर ऊपर ही अंडरलाइन कर देबे. आ वंस यू आर राइटिंग आपण लिखुचंते आंसर को सेते बेले एटा देखिबे कि सब पार्ट्स मोर कवर हो जाई. ओके तो क्वेश्चन 1 को आसीबा. लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. In what ways was India a diverse and multicultural society? Okay, why was it considered so, and how did it differ from other societies of Asia and Europe? Explain with examples. It examples हमको दो पे पड़े. Okay, the first part asila. Okay, in what ways India was diverse and multicultural society? So diversity and the multicultural nature of Indian society. Okay, what ways, how it was diverse. ठीक अछि. तो एटा फर्स्ट पार्ट रहला मोर आंसर. सेकंड पार्ट रे why was it considered so and how did it differ from other societies of Asia and Europe. So why India was considered as a diverse and multicultural society. It is second. Okay, so
अपन जदि देखिबे 1 आउ 2 मोर और लेस सेम अछि किंतु ये पचारुची इन डिफरेंट ओके सेंटेंसेस तेनु हमको भी जो सब हेडिंग्स दबार अछि आंसर रे से हिसाब रे दबार अछि and how it was different from other societies of particularly से पचारला एशिया रो और यूरोप रो ओके हमको एक्सप्लेन करिवार अछि एग्जांपल्स सहित ओके so now let us think about the answer कौन हमको एथरे लिखिबार अछि okay and how we can give a proper answer गोटे आपनर केमती दे परिबे okay so first part को आसंतु कि इंडिया गोटे मल्टीकल्चरल ओके सोसाइटी गोटे डाइवर्स सोसाइटी कहीं की कुआ जाउची ठीक अछि कौन एस्पेक्ट सेमती थिला सेटा हमको लिखिया पे पड़िबो तो फर्स्ट पार्ट हैला इन व्हाट वेज इंडिया वाज ए डाइवर्स एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी तो सेटा आपण कौन कौन आम सोर्सेस हमर कौन अछि ए डाइवर्सिटी रो ठीक अछि सो सेटा हमको फर्स्ट लिखिबार अछि सो फर्स्ट पार्ट जोटा से कहूची कि इन व्हाट वेज इंडिया वाज ए डाइवर्स एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी ठीक अछि सो गोटे गोटे पॉइंट्स हम डिस्कस करिबा एठी गोटे इंसो मन रखिबे आपनकर आंसर ता केते मल्टी डायमेंशनल तारी ऊपर आपनकर बेसी मार्क्स आसे ठीक अछि तो एमती नै कि मु चारटा पॉइंट देबी और ताको बहुत लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन देबी एबे जो पैटर्न हमरो एग्जाम रो अछि केते अधिक पॉइंट्स आपण दे परिबे जोडा कि रेलेवेंट थिबो एट द सेम टाइम ताको आपण ओके गोटे लाइन रे जदी एक्सप्लेनेशन देबे मैक्सिमम दी लाइन रे ताटू अधिक नु not more than a two line explanation सेटा भी डिपेंडिंग ऑन आपण केते फास्ट लिखि पारि one line explanation is fine केबे केबे तो डायरेक्टली आपण से पॉइंट रे ही लिखि देबे ओके जहां भी आपण लिखिया कथा से गोटे पॉइंट रे लिखि कि ताको अंडरलाइन करिवे ओके तार एक्सप्लेनेशन पे भी हमर टाइम नथिबो जदी मोर बहुत गुडे पॉइंट्स अछि कना एई पर्टिकुलर आंसर रे मते 14 मिनिट मिलुछि तो आमे एतरे डिस्कस कर दबे आंसर ही पांचटा आंसर जो माने नुआ प्रिपेयर करचंती कि जो माने प्रिपरेशन सारी चंती आ एबे निजरो स्पीड टेस्ट करिया पे चाहचंती ताहले आपण 14 मिनिट्स भीतर आंसर ता से सब पॉइंट्स प्लस आपण को निजर जदी किछ अलगा पॉइंट्स अछि ताको लेखि कि देखंतु केते टाइम रे आपण सारी परचंती ओके सो फर्स्ट आपण आसंत तो गोटे कि दी लाइन रो इंट्रोडक्शन देबे इंट्रोडक्शन ता सब क्वेश्चन रे इंपोर्टेंट नुह बट अगेन सेटा आपणकर गोटे स्टार्टिंग पॉइंट आपण कहि परिबे आफ्टर द क्लास मो इटा आपणकर पीडीएफ टा हम टेलीग्राम ग्रुप रे दे देबी तो आपण टेलीग्राम ग्रुप रो सेटा डाउनलोड कर परिबे ओके सो फर्स्ट गोटे टू लाइन मैक्सिमम टू लाइन इंट्रो आपण दे परिबे तापर आसिला कि सोर्सेस ऑफ डाइवर्सिटी कौन ओके व्हाट आर द sources of diversity जो पचारला एठी in what ways was India a diverse and multicultural society so first part of the question तारो subheading आपण दे परिबे okay how was India or why okay India is considered a multicultural society or you can just write sources of diversity ठीक अछि तो कौन कौन हमर सोर्सेस ऑफ डाइवर्सिटी रहला तो फर्स्ट और मोस्ट बेसिक सोर्स ऑफ डाइवर्सिटी हमर रहला कौन ना हमें ओके हमर ज्योग्राफी टा बहुत बड़ राइट वास्ट एंड ए डाइवर्स ज्योग्राफी तो हिमालयस रु आपनकर नै कि कोस्ट रहिला प्लेन्स रहिला सेपटे नॉर्थ वेस्ट साइड रे आपनकर डेजर्ट रहि गला ठीक अछि आउ डिफरेंट क्लाइमेट रे से हिसाब रे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग सेंस ओके कोन पिंदुचंती से माने राइट सो जदि आपण अलगा कंट्रीज रे देखियो यूरोपियन कंट्रीज हला तो तांकर सेठी देखिबे ज्योग्राफी एते वैरिड नो अनलेस इट इज ए ह्यूज कंट्री ठीक अछि सो ज्योग्राफी मोर और लेस तांकर सेम टाइप रो तांकर क्लाइमेट तांकर रुहे बुझि परले तो एटा हमें बेसी इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट ए वन लाइन ओके एक्सप्लेनेशन काइना जेतु पॉइंट्स ऊपर हमें बेसी गुरुत्व दबा केते पॉइंट्स हमें लिखि पारु ओके
सो नंबर 1 है सोर्सेस ऑफ डाइवर्सिटी रो फर्स्ट इंपोर्टेंट सोर्स है योर डाइवर्सिटी इन ज्योग्राफी। एटा आपनकर फर्स्ट पॉइंट रहला सोर्सेस ऑफ डाइवर्सिटी अंडर। तापरे नेक्स्ट पॉइंट अपन देखंतु त आउ कोन अछि। सो हमर एठी रिलीजियस डाइवर्सिटी अछि। एटा गोटे मेजर डिफरेंस हम जो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से कहूची कि यूरोप आउ एशिया रो अलग देश से कंपेयर करंतु हमें सेतले कंपैरिजन जतले करिवा फॉर एग्जांपल हम यूरोप रे देखंतु से पर्टिकुलर टाइम रे कि गोटे लॉन्ग सुधी हमें हिस्ट्री रो गोटे टाइमलाइन नबा यूरोप रे गोटे मेजर इश्यू तांकर थिला कि जदि तांकर सेठी रिलीजियस डाइवर्सिटी आसिला ताले सेठी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हे गला। ओके फॉर एग्जांपल कैथलिक्स ओके प्रोटेस्टेंट्स तापरे फॉर एग्जांपल बैप्टिस्ट ठीक अछि तो तांकर से सब इश्यूज गरिका थिला मेनली कैथलिक और प्रोटेस्टेंट ओके प्रॉब्लम ता तांकर से टाइम रे थिला। ओके एशिया को भी जदि आसीबे एठी भी जदि अपन देखिबे फॉर एग्जांपल एशिया रो सबटु बडो लैंडमार्क सब जदि लैंड जदि हमें देखिबा ताले इंडिया कंपैरेबल कि टिके बडो हमर हैला चाइना। तो चाइना रो भी एग्जांपल जदि अपन नौचन देखंतु सेठी भी मोर और लेस किछ गोटे होमोजेनिटी थिला तांको सोसाइटी। ओके रिलीजन कथा जदि कहबे ताले कन्फ्यूशियस ओके कन्फ्यूशियनिज्म सेटा मोर और लेस समस्त फॉलो करथिले। ओके तो सेठी गोटे बट एटी डाइवर्स रिलीजन्स थिले इंडिक रिलीजन्स भी थिले अलगा रिलीजन्स जोड़ा बाहरु आस्थिले अब्राहमिक रिलीजन्स एंड ऑल से मानन को भी ओके एसिमिलेट कराई छि कल्चर इट्स एन एसिमिलेटिव कल्चर ओके सिंक्रेटिक कल्चर ठीक अछि। तो सेकंड पॉइंट हैला रिलीजन। सो मेनी रिलीजन्स हैव टेकन बर्थ हियर लाइक हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म है गला सिखिज्म है गला इंडिक रिलीजन्स जोड़ा ओके आउ अलगा रिलीजन्स बाहरु भी हमें वेलकम करिछु जुडाइज्म है गला ओके इस्लाम है गला क्रिश्चियनिटी है गला so those religions have come to India they have stayed in India they have adapted they have also in many cases they have adapted to the local culture for example अपन केरला जिबे तो सेठी बहुत गुडे एडाप्टेशंस हेची क्रिश्चियनिटी रो जोटा कि आगुरु जोटा कि हिंदुइज्म रे थिला फॉर एग्जांपल जोटा कि क्लासिक कैथोलिसिज्म रे किंबा जो माने कैथोलिक्स अछंती से मन देखिबे तांको घरे एमती चौरा की आरो किछि कांसेप्ट नाही बट अपन केरला रे जिबे सेठी जेमती कि हिंदूज माने के चौरा की किछि से माने तांकर गोटे थाए से माने तुलसी पूजा करती ठीक सेमती एग्जैक्टली इन द सेम वे सो जीसस करो स्टैच्यू ऑफ क्रॉस भी सेमती तांकर जस्ट एंट्री टू द हाउस रे से चौरा टाइप रो सेटा बनाई ओके सो दैट मीन्स लोकली से माने आसी कि एठिकार लोकल कल्चर्स को भी एक्सेप्ट करिसंती और एठिकार लोकल कल्चर जोटा ओके एई कंट्री भी तांको सही हिसाब रे एक्सेप्ट करिस दे हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द कल्चर इनटू द नेशन ओके जदि से इंटीग्रेशन ता न ही परिबो ताहले कोन होबे एबे अपन देखुचंती यूरोप रे जो प्रॉब्लम होची ओके फॉर एग्जांपल अपन जो भी देश कोंतु ओके नेटो रो आउ अपन यूरोपियन यूनियन रो मेजर ऑफिसेस जोटी अपन को बेल्जियम रे अछि ओके यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन बेल्जियम इमिग्रेंट्स माने जो माने सेठी जाई चंती से माने इंटीग्रेट ए माने करि पर नंती त एज अ रिजल्ट सेठी कॉन्फ्लिक्ट होची जर्मनी रे से फ्रांस रे से ताकू देखि कि केते गुडे यूरोपियन देश अछंती जो माने बे इमिग्रेंट्स माने को मना ही कर दोचंती तुमे बाहर पोलैंड जेमती ओके सो एनीवे सेकंड पॉइंट हला हमरो religious diversity okay diversity in religion so आ ऊपर भी गोटे पॉइंट लिखि परिबो कि religions like Hinduism Jainism Buddhism Sikhism were born in India and other major religions like Islam Christianity okay Judaism and they have come to India and they have prospered in India ठीक अछि तो एटा हला आपनकर सेकंड पॉइंट हमें सोर्सेस ऑफ डाइवर्सिटी देखुछु तापरे आउ कोन कोन हमें दे परिबा सोर्सेस ऑफ डाइवर्सिटी हमें ज्योग्राफी देखिलु रिलीजन देखिलु तापरे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ठीक अछि लैंग्वेज रे एते प्रकार लैंग्वेजेस अछि
राइट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस आपनकर 22 टा हेले तापर अलगा डायलेक्ट्स इन थाउजेंड्स से गुडा हमर रोच ओके सो थर्ड हैला लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ओके थर्ड पॉइंट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी it लिख परिबे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड थाउजेंड ऑफ डायलेक्ट्स ओके तो एटा आपनकर थर्ड सोर्स रहला डाइवर्सिटी रो आउ कोन कोन आपन सोर्स रहला एथनिसिटी एटी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स अछंती ठीक अछि यू विल फाइंड योर you know negritos okay you will find proto-mongoloids northeast karikare okay then others proto-australoids even middle east ruby okay and others are also there ठीक अछि धरंतु इंडो आरियंस हे गले ओके द्रविडियंस जदि आपण सेटा गोटे ताको एथनिक ग्रुप कंसीडर करचंती ओके मंगोलॉइड्स हे गले राइट सो this is basically another important source of our diversity that it is a multi ethnic nation ठीक अछि एटा आपण कहि परिबेनी एटा खाली गोटे यू नो जो माने सब गोरा लोक जो आगुर हम जो आरियंस हम कहतलु सो तांकर ही देश सेमति हम कहि परिबेनी कि एमती भी कहि परिबेनी कि एटा खाली जो माने आगुर इंडस वैली रो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थिले ओके तांकर ही देश सेमति भी कहि परिबेनी सो इट इज बेसिकली multi ethnic or diverse in ethnicity okay so next point likhantu or next point that is ethnic diversity ethnic diversity okay so that is also one of the major sources of diversity of India ठीक अछि तापर आसिला गोटे important जोटा कि कोन हमें कहि परिबा इंडिया रो कल्चर और सोसाइटी रो गोटे कहि परिबा स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज रे एटा गोटे सिनोनिम हे जाय कोन दैट इज क्लास एंड कास्ट ठीक अछि तो सेतरे कोन होची आपण सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ओके ऑक्युपेशनल स्पेशलाइजेशन ए सब जिन सोडा रहला सो इट मेक्स इंडियन सोसाइटी वेरी कॉम्प्लेक्स ठीक अछि सो नेक्स्ट हैला डाइवर्सिटी इन क्लास एंड कास्ट ओके तो एटा मैं फर्स्ट पॉइंट टा लिखुछु 20 मार्क्स तीनटा पॉइंट्स अछि तो धरतु 6-7 मार्क्स ईच रे तो हमर पांचटा पॉइंट हे गलानी गोटे गोटे लाइन रो एक्सप्लेनेशन हम लिखिबो ओके सो 14 मिनिट मते दिया इतला ऑलरेडी यदि मु 20 वर्ड्स पर मिनिट हिसाब रे लिखिली मोर पाखा पाखी 5 मिनिट सरी गलानी ओके तो गोटे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मते एठी सारिया पे पडियो राइट जोटा फर्स्ट पार्ट टा को आइतला इफ यू सी दैट in what ways India is a diverse and multicultural society सरला एटा this we have given आउ भी points दे हबो but I don't have time 14 मिनिट सारिवार अछि मते सेटा माइंड रे रखिबे एटा ही एक्चुअली आपनकर मेजर स्किल जोटा एक्वायर करिवे कि समय भितरे ऑल्दो मु 10 टा पॉइंट जानची मते 6 टा ही पॉइंट लिखिबार अछि लिखि पारिबी सेति की समय रे केना जदि मु 10 टा पॉइंट लिखिली मते आउ गोटे को क्वेश्चन रे कॉम्प्रोमाइज करिया पड़िबो ओके so we will stop here for the first part second part kon कहला why was it considered so why was India considered as a diverse and multicultural society ठीक है 1 out 2 more or less अपन कहबी तो प्राय सेम इशू का जाउछ ओके so next हला reasons for multiculturalism okay so तारो सब हेडिंग देबे reasons for multiculturalism okay ओके ए पीडीएफ टा जोटा मु एठी एनोटेट करूची लेखुची जोटा अपन यदि पॉइंट्स निजो बनेबार अछि नोट्स पर ए करिवे ताले अपन डाउनलोड कर दे परिबे टेलीग्राम चैनल रे एटा अवेलेबल थिबो ठीक अछि सो नेक्स्ट
कौन रीजंस रहइबो हमरो मल्टीकल्चरलिज्म पई? व्हाट आर द रीजंस? तो फर्स्ट गोटे बहुत इंपोर्टेंट रीजन हला हमरो एंशिएंट सिविलाइजेशन, जोटा एंशिएंट इंडियन कल्चर, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। ओके, ए जिनसटा हमरो प्रथमरु ही चली आछि। From the beginning we have been a multicultural society. Okay, so first hela ancient civilization. तो एथर अपन लिखबे किए बेसिकली हमको इन्फ्लुएंस करचंती, को कल्चर हमें एसिमुलेट करिचु। ओके, सो डाइवर्स कल्चर्स have existed here. Different cultures have come. Greeks asile, okay, Persians asile, जोटा अपन देखुचंती। Okay, then South Asian contacts भी रहिले। Okay, then other many other countries they have influenced our okay culture। ठीक अछि, इंडियन कल्चर टा इट इज एसिमुलेटिव कल्चर, और जो भलो जिंस सब कल्चर रो हमें एसिमुलेट करिछु। ओके, जोटा कि अपन देखिबे रिलेटिवली हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन एटी कोन पई कोट रिलेटिवली जो गुडा यंगर सिविलाइजेशंस अछि तारो जदि अपन देखिबे सेठी जेतु दे आर क्वाइट यंग एंड से माने को गोटे मूवमेंट रु बाहरी चंती, तो तांकर सेठी जनरली गोटे डोमिनेंट कल्चर टे अछि, and that dominant culture overshadows other cultures। ठीक अछि, whereas इंडिया रे आपणकर कोएक्सिस्टेंस आउ accumulation रहिछि डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशंस रो। ओके, राइट फ्रॉम इंडस वैली रु हमें इवन तार आगुरु प्री हिस्ट्री रु देखि कि ओके आपण वैदिक पीरियड गले तापर डिफरेंट डायनेस्टीज आसिला, तापर आपण मेडिवल पीरियड आसिला जोतर कि लॉट ऑफ सिंथेसिस विथ इस्लाम हैपेंड, तापर क्रिश्चियनिटी आसिला जोटा ब्रिटिश माने जोटा मॉडर्न इंडिया कहले। ठीक अछि, तो एटा हला reasons for multiculturalism is that India is a very ancient civilization। तो एटा फर्स्ट रीजन हम लिख पारी। तापरे आउ कोन ना एठी अपन देखंदु in waves people have come from outside, so there have been waves of migration। ठीक अछि, so and those people who have come, they have left a kind of impression on our cultural fabric। ठीक अछि, so एटा हमें कहि पारी एटा तो सब देश रे, साउथ ईस्ट एशिया रे भी अछि। ओके, अलग देश रे यूरोप रे भी अछि। ओके, प्रॉब्लम टा किबा डिफरेंस टा कोन हला कि सेठी जो माइग्रेशन करिका हला सेठी एसिमिलेशन रो ओके बहुत जगह रे एसिमिलेशन हे परला। इंडिया रे कोन हला सेटा गोटे मेजर डिफरेंस हमरो कि हमें एसिमिलेट कर देलु जो भलो गुण जोडा भलो जिंसो जोडा बाहर कल्चर्स रो। ओके, जोगुड़ा in waves of migration those cultures influenced our society। so second point एथरे अपन लिखिबे waves of migration। ठीक अछि, and assimilation of those cultures into the composite Indian culture। okay, so next हला waves of migration। एथरे you have to write assimilation, okay, of those important features of those cultures जो गुड़ा माइग्रेशन थ्रू रे इंडिया को आछन। ओके, एटा आपनकर सेकंड पॉइंट है। तापर थर्ड पॉइंट हैला कि जेहेतु हमर अलगा बहुत गुडे देशों संगे ट्रेड रिलेशन थिला, कल्चरल रिलेशन थिला, तेनु तांकर कल्चर भी हमें ओके जो भलो गुण थिला सेटा आनलु, आम कल्चर भी रो किछि पार्ट्स भी से माने नै कि फॉलो कले। ठीक अछि, सो नेक्स्ट हला ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। सो थर्ड पॉइंट एथरे आपण दे परिबे ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। ओके, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो एथरे हमें जो देखियो हमरो बहुत गुडे कंट्रीज आउ रीजन संगे ट्रेड थिला। ओके, मिडिल ईस्ट संगे थिला, सेंट्रल एशिया संगे थिला, साउथ ईस्ट एशिया संगे थिला, यूरोप संगे थिला। ठीक अछि, अलगा बहुत गुडे सोसाइटीज थिले जो गुडा की क्लोज सोसाइटीज टाइप रो थिले, ओके आइसोलेटेड सोसाइटीज थिले।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଚାନ୍ସଟା ମିଳିଲାନି। ड्यू टू आवर ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज विथ अदर कंट्रीज आमे तांको कल्चर विषय जानलु, से माने आम कल्चर विषय जानलु। दैट इज अनदर रीजन फॉर आवर मल्टीकल्चरलिज्म। ओके, तापरे पॉइंट नंबर 4, ओके, अंडर रे, सो दैट इज रिलीजियस टॉलरेंस। इवन एंशिएंट इंडिया रे भी जदि अपन देखिबे, सेठी भी रिलीजियस टॉलरेंस लेवल बहुत हाई थिला। ओके, बुद्धिस्ट किंग जदि थिबे सी आउ हिंदू टेंपल्स की जैन टेंपल्स को डिस्ट्रॉय कर देबेनी। ठीक अछि, इवन मेडिवल पीरियड रे भी ओके वी गेट although very few, but we get examples of okay religious tolerance, right? Modern India रे भी सेठी भी आपण बहुत गुड एग्जांपल पाइ छिबे religious tolerance रो। सो ओवरऑल जदि आपण सोसाइटी कथा कहबे, सोसाइटी was highly tolerant, okay, religious tolerance आपण थिला। compare that to the west, वेस्ट रे आपण जे देखिबे इवन डेवलप्ड सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज रे भी तांको सोसाइटी रे अगेंस्ट पर्टिकुलर रिलीजन्स हेट वाज डीपली एनग्रेन्ड। फॉर एग्जांपल ज्यूज को कथा कहंतु, ओके, तो they were hated by the Christians, they were hated by the Muslims, they were hated by other religions also in Europe and America। okay, तार बहुत बढ़िया एग्जांपल आपण इवन लिटरेचर रे पाई परिबे। okay, Shakespeare is considered to be one of the greatest, okay, literary figures in English literature। तांकर भी जदि आपण वर्क्स देखिबे, okay, सेठी से बायस्ड अछि ज्यूज को अगेंस्ट। टेक फॉर एग्जांपल वन ऑफ हिज बेस्ट प्लेज, ओके, जोटा कि रोमांस भी अछि, ट्रेजेडी भी अछि, टू सम एक्सटेंट कॉमेडी भी अछि, कोडा मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस रे आपणकर एंटोनियो बेसानियो जो माने सब प्रोटैगनिस्ट थिले, मेनली क्रिश्चियंस थिले। ओके, आउ जे विलेन थिला के आपणकर शाइलॉक, ही वाज ए ज्यू। ठीक अछि, सो से जो रिलीजियस इंटॉलरेंस इन मेनी सोसाइटीज आपण देखुचंती, इंडिया रे एटलीस्ट सेही पार्ट्स रे आपण देखिबा रिलीजियस टॉलरेंस वाज क्वाइट हाई। ठीक अछि, तो सो सेटा गोटे आउ गोटे इंपोर्टेंट रीजन काहे कि हमरो एठी मल्टीकल्चरलिज्म रो ग्रोथ हैला, आउ हमें कहि परिबा कि इंडिया गोटे मल्टीकल्चरल सोसाइटी। सो हिस्टोरिकली इंडिया हैज बीन ओके रिलीजियसली टॉलरेंट, राइट? बट ताकू जदि आपण अलगा कंट्रीज संगे देखिबे, जे हम एग्जांपल्स नेलु, को कंट्रीज रे कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स सेटा इशू थिला, आउ को कंट्रीज रे गोटे ही मेजर रिलीजन थिला, एमती चाइना रे हमें कहलु। ओके, एवरीवन वाज और मेजरली जे भी धर्म फॉलो करथले दैट इज कन्फ्यूशनिज्म से माने फॉलो करथले। ठीक अछि, सो लास्ट पॉइंट हैला दैट इज it is basically a okay composite culture, okay, or a syncretic culture। so next point, composite culture or a syncretic culture। so even now today's जोटा कि हमें इंडियन कल्चर कहूछु, आपण कोन कहि परिबे इट इज ए हिंदू कल्चर, कि इट इज ए सिख कल्चर, इट इज ए मुस्लिम कल्चर, इट इज ए क्रिश्चियन कल्चर? नो, it is a composite culture। it has taken the good points from all religions, all different cultures, जोड़ा कि आम ज्योग्राफी रे ओके टच रे आछन, राइट? तो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस, दैट इज इट इज ए कंपोजिट कल्चर और ए सिंक्रेटिक कल्चर। बुझि पारले? सो दिस विल बी अनदर पॉइंट। तो एबे आपण देख आ गोटे गोटे लाइन आपण लिखुछन एक्सप्लेनेशन रे, बेसी लिखिबेनी केना समय हबन। ठीक अछि, तो सेटा माइंड रे रखिबे। ए जो पॉइंट्स रा मोस्ट इंपोर्टेंट, आपण केते मल्टीफेसेटेड आंसर टा दोचंती, ना कि आपण गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रो केमिति एक्सप्लेनेशन केते अधा पेज दे दिछन। सेटा आगुरु जेमति थिला, एबे आउ सेही टाइप रो राइटिंग जदि आपण करचंती, बेसी मार्क्स आपण पाइबेनी। ओके, सो केते मल्टीफेसेटेड, केते पॉइंट्स, रेलेवेंट पॉइंट्स, माने पॉइंट्स दबा को अछि तो किछि आडू साडू पसे दियो, सेटा नो, रेलेवेंट पॉइंट्स जा क्वेश्चन पचारुची आपण केतेटा दोचंती। ओके, तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑलरेडी मोर 10 मिनिट हे जिवनी। ओके, आउ 4 मिनिट रहिला,
तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को मते जीवा पई पड़िबो ठीक अछि सो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मते से कहूची कोन हाउ डिड इट डिफर फ्रॉम अदर सोसाइटीज ऑफ एशिया एंड यूरोप एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स ओके सो नेक्स्ट पॉइंट को आसंतो एठी रिक्वायरमेंट ताले कोन डिफरेंस कोन अछि इंडियन कल्चर रे आउ सो अदर सोसाइटीज ऑफ एशिया एंड यूरोप पर्टिकुलरली से कह देला ठीक अछि तो ता ऊपर आपण को लिखिया पे पड़िबो अगेन यू कैन मैक्सिमम केते पॉइंट्स हो 4-5 पॉइंट आपण दे परिबे कारण 4 मिनिट में सारीबार अछि ओके सो comparison with other societies of Asia and Europe ठीक है सो एथरे कौन कौन पॉइंट्स हम ऑलरेडी किछटा हम ऑलरेडी डिस्कस करि सर हला फर्स्ट हला द कांसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एटा डाइवर्स कंट्री किंतु एटा डाइवर्सिटी टा ही आरो unity in the sense that it has held together okay this particular culture okay so unity in diversity सेटा फर्स्ट हमको देखिबार अछि जदि अलगा जगह रे अपन देखबे सिटी डाइवर्सिटी लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एठी भी एमती नहीं कि हमर फॉल्ट लाइंस नहीं बट स्टिल देन वी हैव मैनेज्ड वेल ओके सो पॉइंट 1 जोतरे एटा अपन लिखिबे दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी whereas in other societies जोटी डाइवर्सिटी मिलुची बहुत डाइवर्सिटी मिलुची इंडिया भलिया एते वाइड डाइवर्सिटी आपण जल्दी जोटी पाइबे सेठी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहु एज कंपेयर टू इंडिया अल्प डाइवर्सिटी आपण देखुचंती यूरोप रे कोन होउची एबे ओके त हमर तो ताटू मच डाइवर्स ओके तांगर जेंती जड़ा पोड़ा होउची आपण रास्ता रे एंड ऑल ओके तो सेटा से माने भी चेष्टा करचंती जोटा एबे आपण सुनथिबे सब डीप स्टेट ओके से माने चेष्टा करचंती कि इंडिया रे भी से हो बट सेटा जनरली होबाटा डिफिकल्ट काहे कि ना एठी जो लोक माने अछंती they have been completely assimilated into this composite culture तांकर फीलिंग ऑफ एलिनेशन नाही से माने एमिति भाबेनी ये मु रहिलेडी एठी कि मो पूर्वज माने एठी रहिचंती तथापि एटा मो देश नु ना किछि फॉल्ट लाइंस रहि पारे जोटा कि आउरी ताको एक्सक्राबेट करूचंती हमर पॉलिटिकल औ अलगा आइडियोलॉजीज करिका बट स्टिल देन at the grassroots level लोक माने एठी क्वाइट अटैच्ड ओके तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो सेटा गोटे पॉइंट आपण देबे तापरे आउ कोन पॉइंट्स हम एठी दे परिबा कि हमें केमिति डिफरेंट इंडियन सोसाइटी टा केमिति डिफरेंट अलगा सोसाइटीज टू स्पेशली यूरोप और एशिया रो which is one of the most important features of Indian composite culture is called cultural continuity okay it is a best example of continuity and change so next point which is very important सेटा आपण फर्स्ट रे भी दे परिबे दैट इज कल्चरल कंटिन्यूटी हमर कल्चर रे केते गुडे एंती जिंस अछि जोडा कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन रो ए पर्यंत कंटिन्यू करूछु ओके ओके कल्चरल कंटिन्यूटी आपण फॉर एग्जांपल यू टेक मोहनजोदड़ो रे हमें देखिछु ग्रेट बाथ कोन होतला ग्रेट बाथ रे रिचुअलिस्टिक बेदिंग होतला ठीक अछि कोटे कोनोसी रिचुअल पे लोक माने सेठी जाई गाधोथले एबे आज का डेट को आसंतु से प्रैक्टिस टा एबे भी इट इज डीपली लोकलाइज्ड इन आवर कल्चर ओके तो कोन ना कोनोसी गोटे मेजर ओकेजन रे भलो हो इवन खराब भी हो आपणकर जाई तुठरे आपण बुड़ पकोचंती राइट बड़ फेस्टिवल हिसाब रे महाकुंभ हो गला एंड अदर सेठी भी सही रिचुअलिस्टिक बेथिंग आज पर्यंत कंटिन्यू होचे एटा मु गोटे एग्जांपल देली आउ कोन फॉर एग्जांपल हमें पीपल ट्री टा पूजा करथुलु से टाइम रे ओके इंडस वैली बेले आज भी करछु
many other trees are also worshipped. एमती बहुत गुडे जिनस आपण देखिबे there is continuity, but ता सहित चेंज भी हेची जो जिनसोडा हमको लागिला नहीं विथ टाइम ए जिनसोडा हम कल्चर रो ओके ठीक नुह एटा चेंज होगा कथा ताले हम चेंज भी करछु. सो कंटिन्यूटी एंड चेंज बोथ दीटा जाक ऊपर गुरुत्व रही है. कल्चरल कंटिन्यूटी आपको कंपेयर करंतु जो ग्रेट सिविलाइजेशन सेतल थिले मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सुमेरिया, द मायंस, ओके रोमन्स, राइट. जो ग्रेट रोमन एम्पायर जे की जोटी की जूरिस्प्रुडेंस हिस्ट्री लॉ अलगा वर्ल्ड रो सब सिविलाइजेशन सोसाइटीज तांकोटू बहुत गुडे सिखी चंदी. एबे करेंटली अपन जो देखिबे तारो किछि सेटा कंटिन्यूटी किछि अछि कि किछि नै. ओके इटली रो करंट सोसाइटी अपन देखिबे कंप्लीटली डिफरेंट सेटा. सेम थिंग विथ इजिप्ट, सेम थिंग विथ मोस्ट अदर ओके ग्रेट सिविलाइजेशंस ऑफ दैट टाइम. से माने कंटिन्यूटी टा रखि पारलेनी किंतु हमरो कल्चरल कंटिन्यूटी आज पर्यंत अछि. ओके एटा हला आपनकर सेकंड पॉइंट जोटा आपण लिखि पारे, राइट. आउ कोन कोन रहला. सो नेक्स्ट पॉइंट आसिला आपनकर कि एठी जो हमरो इंडिया रे ओके देयर आर बेसिकली लिविंग ट्रेडिशंस. लिविंग ट्रेडिशंस कोन ना सेई टाइम रो जो आर्ट फॉर्म्स थिला पॉटरी आज भी पॉटरी आपण देखिबे ओके सेई टाइप रो न हले भी बहुत चेंजेस आछि. ओके एंड लॉट ऑफ थिंग्स जोटा आर्ट्स रे आपण देखुचंती सेटा हमें आज पर्यंत कंटिन्यू करूछु. ओके तो आर्ट फॉर्म्स से गला, क्राफ्ट से गला, रिचुअल से गला जोटा एग्जांपल किछटा देली. ओके इन मेनी अदर सोसाइटीज सेगुडा एबे केवल म्यूजियम रे रहि जाइछि. ओके सेगुडा लिविंग ट्रेडिशंस रहिनी सेगुडा. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट आपण नै परिबे दैट इज लिविंग ट्रेडिशंस. रिचुअल्स, आर्ट्स, क्राफ्ट्स एक्सेट्रा सेगुडा बहुत टाइम पर्यंत हमें एबे भी ओके कंटिन्यू करूछु से जिंस. बट इन मेनी अदर कल्चर्स दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके सेगुडा एबे म्यूजियमाइज रहि जाइछि किंबा सेगुडा बेसिकली इन देयर मेमोरीज रहि जाइछि. ओके आउ कोन कोन डिफरेंसेस हमें कहि परिबा. Okay, what are the other differences which we can say? So गोटे तो हैला से जो रिलीजियस एस्पेक्ट ता हमें ऑलरेडी कहिलु. ठीक है, तो दैट ऑलरेडी वी हैव सीन दैट रिलीजन को जदि हमें देखिबा इन अदर कंट्रीज ओके तो डाइवर्सिटी इन रिलीजन वाज ए मेजर रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी. ओके जोटा कि आमर एठी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक प्लुरलिज्म जोगु ओके एसिमिलेशन हैला बेसी. ठीक अछि. सो सेटा आपण से जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी सही पॉइंट रे एटा लिखि देले ठीक हबो. तो सेतरे एग्जाम से काई कहछि एशिया और यूरोप से कहछि कंपेयर करिया पे तो एशिया रे चाइना रे एग्जांपल देबे कि मेनली तांकर सेठी ओके रिलीजियस स्फीयर रे कन्फ्यूशनिज्म ओके सेटा ही डोमिनेंट थिला. आउ यूरोप रे मेनली कॉन्फ्लिक्ट थिला बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथोलिक्स. ठीक अछि. तो सेटा आपण सेठी दे परिबे राइट इन द फर्स्ट पॉइंट आल्सो यू कैन राइट इट. आउ कोन कोन रहला गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस जोटा कि अदर कल्चर्स रे हमें पाइलुनी दैट इज अडैप्टेबिलिटी. इंडियन सोसाइटी हैज अडैप्टेड जोटा मु कहली कंटिन्यूटी सेकंड पॉइंट एंड चेंज वी हैव अडैप्टेड टू द टाइम्स. तो अडैप्टेबिलिटी adaptability we have adapted with the times. Okay as a result सेति पई हमें कहि परिबा अलगा कल्चर्स गुडा अडैप्ट करि परलेनी सेति पई दे तांकर कंटिन्यूटी रहलन. ठीक अछि. सो अडैप्टेबिलिटी चेंज संगरे केमती आपण अडैप्ट करिवे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर रूट्स. ओके जोटा बेसिक्स आपणकर सेटा कॉम्प्रोमाइज न करिकि आपण समय संगे केमती बदलिबे. सो
that you can write adaptability. ଆଉ ଗୋଟେ major difference अपन जो देखिबे other societies और cultures रो कि तांको background कौन थिला अपन देखिबे बहुत गुडे cultures करो economic background थिला, political background थिला, religious background थिला. Indian culture रो main background ता religious नुहो कि economic नुहो कि political नुहो, it is basically spiritual and philosophical. Okay, the foundation of Indian culture is strongly moved, okay, in spiritual and philosophical, okay, concepts. ठीक अछि तेणु सेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस जोटा कि आज पर्यंत हमर एई कल्चर को कंपोजिट कल्चर को सिंक्रेटिक कल्चर को बंचै की रखि छी. ओके सो आरो जदि आपण देखिबे अलगा कल्चर्स रे जोटी इधर हेडोनिस्टिक कल्चर्स और मटेरियलिस्टिक कल्चर्स जोड़ा ठीक अछि एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो से माने गोटे टाइम पर जतले इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहलानी तो ताकर कंप्लीटली यू नो सेठी कल्चरल चेंज आसी गला पूरा ओके पूरा कल्चर बदली गला आउ केतेटा देश रे जोटी की जंतु से माने स्ट्रिक्ट सेक्युलरिज्म के धरि की बसले ओके सो ताकर भी सेम दिन होला ठीक अछि सो इंडिया रे कोन हला हमरो both philosophical and spiritual foundation of the culture. So next hela philosophical and spiritual foundation. Okay, which is against or which is different from other culture जोटी की foundation based on religion हेतिबो based on economy हेतिबो okay so एटा हमर पांचटा पॉइंट हे गला so more or less 14 minutes रे ए सबु लेखिबा with गोटे गोटे explanation okay तापर पुनी मते यदि समय मिलु समय मिलिया बहुत डिफिकल्ट जदि मोर समय सरी गला ताले कोन करबी ताले जो पार्ट्स उडा मो लिखि परनी सपोज मो पार्ट 1 पार्ट 2 भलरे लिख देछि ओके किंतु ए जो कंपैरिजन को असला मोर पई 2 मिनिट थिला एगुडा मु सब लिखि परिबिनी ताले कोन तो मु गोटे स्ट्रक्चर फंक्शन डायग्राम कर दे परिबी ठीक अछि सो एई पॉइंट्स उडा मु गोटे तार एक्सप्लेनेशन न देकी मु गोटे फिगर तार कर दे परिबी राइट बुझि पाले सो केते मल्टीफेसेटेड आपन को आंसर ता रहउची मार्क्स ता ऊपर डिपेंड करे सो टोटल आंसर रे हमर पका पकी 15 टी पॉइंट हमें देछु जो तीनटा पार्ट थिला क्वेश्चन रो 5 5 5 करके हमें देछु ओके सो दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन 1 फर्स्ट क्वेश्चन ता हमें देखिलु नाउ यू कम टू द सेकंड क्वेश्चन second question को कहूची what were the causes and consequences of Odisha famine of 1869 को famine जोटा discuss in light of the following points आपन को डिस्कस करैर अछि एई पॉइंट्स को फोकस करके कोन ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ फोर्सिबली एक्सट्रैक्टिंग एग्रीकल्चरल रेवेन्यू ओके तो कैश क्रॉप्स ओके कि जो तरह प्रॉफिट हबो सेगुडा दियो ओके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करो एग्रीकल्चर को इनफैक्ट जेतो बळे हमरो ए फमाइन हैला से टाइम रे भी से माने राइस ओके एक्सपोर्ट करूथिले ब्रिटिश माने जदे ताकु लाभ हबो ओके तापर सेकंड द हेवी डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया on forces of nature irrigational facilities not la so it basically okay completely dependent on the vagaries of nature au 50 65 रे आपनकर मानसून भलो हि नटला 66 रे आउरी खराब हला 30% जदि एठी हमर डेटा भी दबार अछि जोटा कि हम डिस्कस करिया जेंति कि 30% कम आपनकर रेनफॉल हितला 65 रे ओके सो मानसून फेलियर थिला लास्ट ईयर भी थिला एथर को भी हला ठीक अछि तो सेटा पुनी आउ सिचुएशन खराब कर देला राइट सो ऑलवेज इट भी मन रखियार अछि कि किछिटा फैक्ट्स आपनको फैक्ट हिसाब रे दबार अछि जेंति कि इट इज दीटा कथा पचालो कॉजेस पचाउची आउ कॉन्सिक्वेंसेस पचाउची तो क्वेश्चन पेपर रे मु अंडरलाइन कर देली कॉजेस कोन हबो कॉन्सिक्वेंसेस कोन ठीक अछि कॉजेस कोन हबो कॉन्सिक्वेंसेस कोन ठीक अछि
आउ ताको सही हिसाब रे कोटा आपनकर इकोनॉमिक कॉज हैला ओके सोशल कॉजेस रहला क्लाइमेटिक कॉजेस रहला सेमती हम देखिबा पर्टिकुलर पॉइंट्स फॉर एग्जांपल कॉन्सिक्वेंसेस भितर आपण इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखिले आपनको रेट गुड़ा बहुत बढ़ी गला सेठी पर्टिकुलर हम एग्जांपल्स दबा कोन ना गोटे एग्जांपल आपण दे परिबे जोटा गोटे फैक्ट गोटे कि सेतबले बिफोर द हमाइन आपणकर ओडिसा रे मेनली कटक रे आपणकर 1 मंथ ऑफ राइस ओके मींस जदि आपण राइस गोटे मंथ किनबे मंथ इज बेसिकली ए कोन यूनिट ऑफ वेट सेतबले सेटा यूज होतला एठी एठी हम जदि देखिबा गवर्नमेंट रो जा कैलिब्रेशन थिला 1 month okay was somewhere around 37 okay kilograms kgs हिसाब रे थिला 37 kgs 1 month तो गोटे मंथ रो ओके गोटे मंथ राइस रो कटक रे प्राइस वाज 1 rupees 50 पैसा से टाइम 37 kgs of rice 1 rupees 50 पैसा जोटा कि 6 मास वर्ष भितरे 10 times रो अधिक इंक्रीज हेगला 16 टका हेगला सेटा so from 1.5 rupees per month to it became 16 rupees per month in Odisha in Cuttack mainly हैला more than 10 times increase हेगला तेणु एमती पर्टिकुलर जदि समस्त तो लिखिबे प्राइस इंक्रीज हला मु जदि एई पॉइंट टा ऐड कली ओके ताले मोर मार्क्स टा अधिक आसी ठीक अछि सो कीप दैट इन माइंड सो लेट अस सी एई दीटा जिंस फर्स्ट हम कॉजेस लिखिबार अछि तापर कॉन्सिक्वेंसेस लिखिबार अछि सेम जिंस दी लाइन रो गोटे इंट्रोडक्शन अपन देबे ओके तापर यू स्टार्ट विथ causes okay causes of the famine कौन थिला आपनकर famine रो cause okay that you have to write तो प्रथमे तो obviously first और most important cause आपनकर थिला the climatic factors climate जोगु okay so first आपण लिखि परिबे the climatic factors okay climatic factors रे first तो हैला आपनकर monsoon failure okay so monsoon had failed in 1865 and also in 66 okay इतरे केते ताको फिगर्स भी दे देबा 30% लेस आपनकर वर्षा हेतिला ठीक अछि 30% लेस आपनकर वर्षा हेतिला बुझ पाले सो ऑब्वियसली एवरेज रो 30% कम आपनकर होची ताले यू नो क्रॉप फेलियर होबो सेतरे ठीक अछि एटा गोटे रीजन सेकंड रीजन कोन से वर्ष आ गोटे प्रॉब्लम हला वर्षा तो कम हला से तो गोटे जिंस तापरे अर्ली रिट्रीट ऑफ द मॉनसून ड्यूरिंग दोस इयर्स ओके सो अर्ली रिट्रीट ऑफ मॉनसून तो एटा मेनली कोन अफेक्ट करला विंटर राइस रो क्रॉप को अफेक्ट करला ठीक अछि सो एटा क्लाइमेटिक रीजंस आपण दे पारे kana बहुत गुटे टाइप रो रीजंस अछि ओके ताको हमको 14 मिनिट्स रे से रीजंस सारी की पुनी कॉन्सिक्वेंसेस को भी सारी अछि ओके नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जोड़ा सब हमर एटी सेटी थिला कोन फर्स्ट तो हैला कि मोनोकल्चर चलथिला डिपेंडेंस वाज ऑन राइस ओके सो जदि सेठी ड्रॉट होची ताले क्रॉप फेलियर हैला ओके अलगा कोनोसी क्रॉप ऊपर आपण डिपेंडेंट नु सो फर्स्ट हैला मोनोकल्चर एंड राइस डिपेंडेंस सो एटा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अंडर रे लिखंतो नेक्स्ट पॉइंट हैला ओके नेक्स्ट कॉज हैला okay so that is monoculture okay and excessive dependence on rice सेटा ही खाली से माने ग्रो करथिले आ गोटे जिंस इरिगेशनल फैसिलिटीज नथिला कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून ओके सो सेकंड हला आपनकर
lack of irrigation facilities. As a result, आपनको complete dependence थिला, okay, on monsoon. तो monsoon failure हेले बस आउ कि कौनसी, okay, there is no hope for the crops, right? सेटा हेला. तापरे next आउ कौन से तेरे issues हमें देखो दुलु related to your other reasons for the famine. तो economic factors को तापरे आसले. तो first तो हेला कि हमर लोक माने poor थिले, ठीक अछि. आउ poverty जोगु many people were basically normal times re bhi it was difficult for them to make, okay, the ends meet. Okay, तापर पुणी जेतला बढ़ी जाउची price तो सेटा impossible हे गला तांको पे. तो as a result many people died. 1 million 10 लाख पाखापाखि लोक डेथ हे गला. Many were displaced, forced displacement हे गला तांकर, अलगा जागु पळेले. ओके, जो जागु जाउथिले सेठी पुणी से प्रॉब्लम टा स्टार्ट हेला. ओके, आउ as a result जेतु सप्लाई कम हे गला आउ डिमांड बहुत अधिक हे गला, प्राइस राइज हेला. जार एग्जांपल मन देली. ओके, मोर देन 10 टाइम्स आपन प्राइस राइज हे गला. ओके, कटकर एग्जांपल हमें दोछु 1.5 रुपीस पर माउंड रु 16 रुपीस पर माउंड आपनकर राइस रा प्राइस चेंज हे गला. ओके, विद इन मंथ्स. तापरे जेहेतु मोनोकल्चर थिला आउ एटा गोटे राइस ईटिंग बेल्ट, ओके, अल्टरनेटिव फूड रो कोनोसी व्यवस्था नथिला, राइट? सो सेटा गोटे रीजन हला. ओके, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन राइस. से क्रॉप फेलियर हे गला. जदी धरंतो हमरो सेकंड गोटे, ओके, स्टेपल थांदा कि सेकंड गोटे फॉल बैक ऑप्शन थांदा, लोक माने सेठी कि भी ताको भी देखि परथांदे. ओके, सो नेक्स्ट सब हेडिंग रे अपन लिखिबे इकोनॉमिक फैक्टर्स. ओके, कॉजेस भीतर ही एटा जीवो, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स. तो फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर कोन? पॉवर्टी हे गला. सो नॉर्मल टाइम रे भी देयर वर लॉट ऑफ पीपल जहां को खाया मिलिया डिफिकल्ट थिला से टाइम रे, इम्पोवरिश स्टेट रे से माने थिले. ओके, तो एबे आउरी एते सिचुएशन खराब हे गला तो यू नो एब्सोल्युटली दे हैड नो चांस. ईदर दे पेरिश्ड और दे हैड टू फ्ली. ओके, से माने को अलगा को जगह को माइग्रेट करिया पे पड़ला. तो सेटा हला नंबर 1 पॉवर्टी. तापरे नेक्स्ट आपनकर रहला हाई प्राइसेस. तो इठी से एग्जांपल ता दे परिबे, ठीक अछि. सो प्राइस राइज और हाई प्राइसेस, that in Cuttack the price of rice increased from rupees 1 rupees 50 paisa per month, which is government actually month ro different तार अछि. को जगह रे 20 केजी थिला, को जगह रे 15 केजी थिला. ओडिसा रे जोटा कि गवर्नमेंट मंथ जोटा that was around 37 kgs. So 1 rupees 1.5 thila per month at Cuttack, it went to rupees 16 per month. Okay, तो specific example दे देबे ताले आपन को सुविधा हो. So high price rise, ठीक अछि. तो प्राइस राइज एते फास्ट हला, एते स्टीप हला कि it was, you know, even जोटा कि मिडिल क्लास भी कोचन से लोक पे भी डिफिकल्ट हे गला. ओके, तापरे आउ जोटा हमें देखथिलु कि अल्टरनेट फूड सोर्स किछि नथिला. सो थर्ड पॉइंट से तर लिखबे इकोनॉमिक फैक्टर्स रे लैक ऑफ alternate food source. Lack of alternate food source. ठीक है. So climatic causes गला, agricultural practices गला, economic factors गला. Okay, next आउ कौन रहला administrative आउ जोटा कि आपन को infrastructural issues भी थिला. Okay, तो एमती तो नटला कि से माने ब्रिटिश माने सब यू नो रेडी करी कि आपन पे रखथिले भलो आपन इंफ्रास्ट्रक्चर थिला एंड ऑल दोस थिंग्स. सेमती तो नो. ओके, सो नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन.
infrastructure and communication सेटा भी गोटे important reason infrastructure and communication okay so एथरे कौन कौन हमरो मेजर इश्यूज रहला तो फर्स्ट तो हैला कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन रो व्यवस्था नथिला ता माने कोन एमती तो नो 80 फामाइन हैला तो इंडिया सारा तो फामाइन नथला बहुत जगह थिला जोटी सरप्लस फूड थिला सेठो हमें आनी पर थांतु ओके तो ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट फैसिलिटीज स्टोरेज फैसिलिटीज ए सब प्रॉपर नथिला सो एथरे अपन लिखिबे फर्स्ट हैला पुअर ट्रांसपोर्टेशन आ गोटे लैक ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज एमती नो कि पोर्ट्स नथिला ओके कलिंग एंशिएंट टाइम रो इट वाज अ पावर हाउस मैरीटाइम पावर हाउस ए माने एते तापर ताको डेवलप करिना ब्रिटिश माने ठीक अछि सो इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन एटा भी गोटे इंपोर्टेंट रीजन आपण दे परिबे ओके तापर आसिला नेक्स्ट दैट इज मेनली योर गवर्नमेंट रो पॉलिसीज ठीक अछि व्हाट वर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ओके सो गवर्नमेंट रो पॉलिसीज एमती थिला कि से माने एते इंपोर्टेंस इनिशियली देलेनी से माने ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को जानी पारलेनी जोड़ा कि गोटे बहुत बड़ा फेलियर से टाइम रो जो माने सब इंचार्ज थिला दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस जो एबे कंट्रोवर्सी हम रहितिला रेवेन्शा को नारू रेवेन्शा यूनिवर्सिटी टा सेटा चेंज करिया पे बिकॉज़ ही फेल्ड मिजरेबली ओके इन कंट्रोलिंग द famine गवर्नर से हिसाब रे से थिले ओके so he was basically से ताको जा steps नवा कथा to stop it से ताको properly नहीं परले okay so next point रे आपण करो government policies okay how government policies further worsened the situation right so तो फर्स्ट तो हैला से माने इनिशियली एते सर भाबले कि एटा एते गोटे लोकलाइज सिंस ठीक हे जो निजे निजे ओके सो डिलेड रिस्पांस से माने मॉनिटरिंग करिया पे भी इंटरेस्टेड नथिले ओके मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली से माने करू नथिले और से माने इनिशियली भी दे वर नॉट माने आफ्टर पीपल लॉट ऑफ पीपल डाइड तापर रेस्पॉन्स आसेला so delayed response why it was delayed because they underestimated the crisis okay so next हैला underestimation of crisis तापर से टाइम रे ताकर सेमती किछि गोटे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि गोटे प्रॉपर मॉनिटरिंग मेकानिज्म सेमती भी नथिला आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस थिला कोन they were very focused on the free market principle सेथरे गवर्नमेंट इंटरफेयर करिया था नु केते रेट होची डिमांड एंड सप्लाई सेटा तार मार्केट डिटरमाइन करची ए ड्रॉट हे गला तो बहुत बड़ी गला ठीक होची जे पाइला पाइला जबार पैसा होची से खाइबो जे पैसा होची से खाइबो कांसेप्ट तो से कि सेठी आ पब्लिक वेलफेयर रा कांसेप्ट कि जो लोक गोटे माने ताको बेसिक जिंसटा भी मिलुनी आ सेटा गवर्नमेंट रो काम कि से वेलफेयर इनिशिएटिव्स थ्रू सेटा देखिबो सेटा से माने टिके रिलेक्टेंट हेले देयर इज अ फेमस स्टोरी कि गोटे शिप आसीथिला ओके कैलकाटा राइट बोट टाइप रो से गुडा सेतरे से माने राइस नहीं कि आस्थिले ठीक अछि आउ सेटा एक्चुअली तार किछि टेक्निकल इश्यूज हला तो से हमर ओडिसा कोस्ट रे ओके सेटा आसी कि रहि गला तर कटक को पहुंची पारलानी इनिशियली से कटक को आसे थिला जो जगह रे से रहिला सेठी आ किछि करि होबन सेठी मोस्टली रिमोट कोस्ट थिला तो सेठी जे कैप्टन ऑफ द शिप से कहला आपण नहीं जानतु फर्स्ट तो कहला कि
एतिकी दाम रे नियंतु से तापर के नेलेनी ओके तो तापर से देखना कि तो सॉरी जीवो एटा हम कोन करबा बिफोर शिप आल्सो wrecked or something तो शिप को से अबैंडन करिकी किबा शिप को नेकी जाबी एमती कि छोटा हितला से जाइथांते आ लोड आउ नहीं पर नथांते तो से कहले ठीक अछि लोकल पॉपुलेशन को कोंतु कि आपण गवर्नमेंट निजे आसी कि नहीं जानतु फ्री रे नियो किछ असुविधा नहीं पैसा दे दरकार नहीं दैट आल्सो सेतेबेले जे सेठी ताकर इंचार्ज थिले ब्रिटिश इंचार्ज से मना कर दे ना हम दरकार नहीं ओके सेटा ठीक रे सेल हवा दरकार बुझिपारे तो ना कॉन्सेप्ट ए टाइप रे थिला राइट और एटा किछि गोटे एमति नो कि खाली ब्रिटिश टाइम रे हेतला ओके ता परे भी ए टाइप रो जिंस हेछि इफ यू रिमेंबर जेतले मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थिले तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशंस रे मेनली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रे माने टन्स ऑफ ग्रेन्स वेर रॉटिंग ठीक अछि गजा हे जाउथला ओके रॉट करूथला तो सुप्रीम कोर्ट कहले सेटा करिवो कोन तुमे ना ठीक है ताको पोती दो ठीक अछि गवर्नमेंट सेतेबेले जो कहले मनमोहन सिंह को गवर्नमेंट थिले हम पोती दो तो सुप्रीम कोर्ट कहले पोती काई दो तो लोकन दे दो ना जे जार दरकार से एटलीस्ट पुअर पीपल कैन हैव इट नहीं दिया हलानी पोता हला बुझिपारे तो एमती नो कि से टाइम रही ए टाइप रो मेजर्स सब निया होतला सो गवर्नमेंट रो जे भी पावर रे थांतु आम लोक थांतु बाहर लोक थांतु थरे पावर को आसी गले ए गोटे जिंस मुंडो रे चढ़ी जाए सेति पई आपण माने आकु जाई कि सिविल सर्वेंट्स हेबे ओके तो एई जिंसटा गोटे माइंड रे रखिबे आपण जॉइन करचंती पब्लिक सर्विस पई ओके पब्लिक इज आउ से टाइम रो पब्लिक और ए टाइम रो पब्लिक रे हेल एंड हेवन डिफरेंस आपण केते कष्ट करी कि ओएस की आईएएस की अलाइड सर्विसेज करी का पाइबे राइट बट द पब्लिक दे रिक्वायर तांकर जो बेसिक नीड ता सेटा तांको पाखे पहुंचू डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस ता हो आपण केते कष्ट करी कि जाइचंती आपण को पोजीशन रे अछंती कोन से देयर रियली डज नॉट मैटर टू देम सेति पय आपण केतेटा अनफॉर्चूनेट न्यूज़ भी देखुचंती बिटवीन पब्लिक एंड सिविल सर्वेंट इंटरेक्शन ओके but more or less we can say that most of the civil servants ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଓକେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତ ହେଲା ଆପଣ ମନିଟରୀ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଛରେ ପକେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି there have been lot of people ଯୋଉମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବଢିଆ କର୍ପୋରେଟ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କୋଉଠି ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ରେ ମାସକୁ मे बी 10 लाख अर्न କରୁଥିଲେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି ସେତିକି ଇନକମ୍ ହବ ओके जोटा कि यू नो लीगल जो जिनसटा मु कहूची ओके बट दे हैव लेफ्ट इनकम कहीं ना सेमान देखिले कि नहीं लॉट ऑफ अदर इश्यूज पर्सनल इश्यूज भी रहते बट मेनली डायरेक्ट सर्विस हमें लोगों को कर परिबे ओके सो एनीवे विदाउट यू नो गोइंग आउटसाइड द टॉपिक तो सेटा भी तांकर गोटे इश्यू थिला से माने फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स ऊपर बेसी फोकस करले रादर देन वेलफेयर प्रिंसिपल्स सो नेक्स्ट पॉइंट एथर लिखिबे फोकस ऑन फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स ओके तो एटा गवर्नमेंट पॉलिसीज कला नेक्स्ट आ कोन एथर लिखिबा सो सोशल फैक्टर्स आर आल्सो देयर ओके एथरे सोशल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थिला सो यू विल आस्क केमती सोशल फैक्टर्स केमती इन्वॉल्व थिला पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई थिला म सेठी से एरियाज रो प्लस जो डाउन ट्रोडन जो माने थिले ताको माने कंडीशन आउरी मिजरेबल हे गला ड्यू टू द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ओके सो सोशल फैक्टर्स रे पॉपुलेशन डेंसिटी दे परिबे आ कास्ट सिस्टम दे परिबे ठीक है सो इफ यू सी क्वेश्चन हमरो या थिला कि कॉजेस देखिलु एबे असला कॉन्सिक्वेंसेस मे बी कॉजेस जदी अधिका बहुत हे गला व्हाट यू कैन डू इज जति कि अपन लिखि परचंती सेति कि लिखिबे अराउंड 10 12 टा कहि देली सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल जति कि लिखि परचंती का 14 मिनिट मते मिलु ओके नाउ वी विल कम टू कॉन्सिक्वेंसेस
कौन कॉन्सिक्वेंसेस हमर हला। तो ऑब्वियसली गोटे तो कॉन्सिक्वेंस हला ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ। ठीक अछि। सो around 1 million people died। ठीक अछि। 10 लाख अराउंड लोक आपनकर पेरिश करि गले थरे। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर ओके आपण कहि परिबे कॉन्सिक्वेंसेस। तापरे ड्यू टू दिस एई जिंसडा पई अदर थिंग्स आल्सो हैपेंड। ठीक अछि। जेमति कि तांकर फमाइन कोड एंड अदर थिंग्स ओके सेगुडा आसेला। सो फर्स्ट हला मास आउ खाली डेथ नो जो मन तो जहां डेथ हेगला आउ लोक माने खाइबा पई भी पाइलेनी। तो स्टारवेशन भी है आपको मास स्टारवेशन। तो ये आप लिख पारे लॉस ऑफ लाइफ एंड मास स्टारवेशन। ओके तो यहाँ फास्ट कॉन्सिक्वेंस गला। तापरे आउ कौन सब इश्यूज है प्रोब्लेम्स है सेठी। आउ गोटे मेजर इश्यू है कौन पोवर्टी जोटा आगुरी भी पोवर्टी थिला सेटा आउरी सीरियस है गला। ओके सो इम्पोवरिशमेंट फर्दर इम्पोवरिशमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके तो जो माने से जो अल्प किसी सेव करके रखी कौन गोटे से करी से खाया तो मिलनी तो सेव कौन कर राइट। सो डेब्ट ट्रैप रे से पुनी पसिले जो महाजन्स थिले एंड यू नो द मनी लेंडर्स राइट। सो नेक्स्ट है इम्पोवरिशमेंट एंड डेब्ट ट्रैप। इम्पोवरिशमेंट एंड डेब्ट ट्रैप। ओके आउ कौन रहा आउ कौन कॉन्सिक्वेंसेस है। सो सोसाइटी रो जो सोशल स्ट्रक्चर टा थिला सेटा डिसरप्ट है पूरा ब्रेकडाउन है तो कहि परिन बट डिसरप्ट है। जो लोक को खाया पे मिलनी से कौन करे से आउ किछि भाबियार ही तार चांस नहीं ही हैज टू ईट ताले से कौन करिवो से तार जहा पारला से कले। तो लॉ एंड ऑर्डर भी से हिसाब रे प्रॉब्लम है। ठीक अछि। लॉ एंड ऑर्डर भी से हिसाब रे प्रॉब्लम है से चोरी कला जहा कला बेगिंग कला क्राइम इंक्रीज हे गला। सो सोशल डिसरप्शन बहुत एथरे हैला। ठीक अछि। सो नेक्स्ट पॉइंट सोशल डिसरप्शन नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस यदि अपन देखिबे सोशल डिसरप्शन। फार्मर जी थिला सी तार रेंट फेंट दे पारलानी तो ता लैंड भी पळेला महाजन पाखु। ओके सिचुएशन इतले बहुत खराब होला किछि करी होबनी तर कोन हबो लोक छाडी के पळेबो जे जगहटा। सो फोर्स माइग्रेशन हैला। सो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन टेक डाउन कॉन्सिक्वेंसेस रे फोर्स माइग्रेशन। जो जगह को माइग्रेट कले लोक एनमास से जगह रिसोर्सेस ऊपर भी प्रेशर पड़ला। ठीक अछि। सो फोर्स्ड माइग्रेशन। तापरे नेक्स्ट पॉइंट आउ कौन कौन आम कॉन्सिक्वेंसेस कहि परिबा जोटा बे कहली से फार्मर्स माने सेमिति तो तांको अवस्था खराब थिला एबे से आउ रेंट भी दे पारलेनी। ओके एज अ रिजल्ट मनी लेंडर्स माने से माने नहीं गले लैंड। सो लैंड एलिनेशन बढ़िला इंक्रीज्ड लैंड एलिनेशन फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज दे कुड नॉट पे ओके द मनी लेंडर्स रेंट टा पे करि पारलेन से माने। सो farmers karo okay farmland alienation that increased okay increased land alienation। okay increased land alienation। तापरे आउ कोन लॉन्ग टर्म रे जदि देखिले लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डिक्लाइन आल्सो स्टार्टेड। ठीक अछि। ओडिसा रो इकोनॉमी ऊपर तार प्रभाव पड़ला। ओके so that was another problem trade commerce agricultural production all suffered। so long term economic decline।
आउ कौन मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट। सो एगुड़ा सब आम देखिलु नेगेटिव। गोटे पॉजिटिव थिंग जोड़ा है से माने एटलिस्ट जानिले गोटे से माने फाइन यू नो कोड बनेले। सो पॉलिसी चेंजेस किछि हैला बट इट वाज वेरी लिमिटेड। एमती नो के एटा लास्ट फाइन थिला आ परे भी बहुत बड़ बड़ फाइन छै, ठीक अछि, ऑल ओवर इंडिया। सो नेक्स्ट हैला लिमिटेड पॉलिसी चेंजेस, ठीक अछि, एटा पॉजिटिव रे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस गोटे हैला। सो गवर्नमेंट चेंज द पॉलिसी एमती एटा जेमती रिपीट हबनी। ओके ए सब जिंस गवर्नमेंट दे डिड इट, बुझि पर आपणकर फाइन कोड आसला तापरे आपणकर टेलीग्राफ्स आगु को जाइकी हमर रेलवे लाइन्स रोड कनेक्टिविटी एगुड़ा सब आउरी बेटर कराला ओडिशा पई अदर प्लेसेस पई। सपोज हम रेल कनेक्टिविटी भलो थांता ताले ठीक अछि हमें आनी पार थांतु कना सही टाइम रे अलगा स्टेट्स रे आपणकर अलगा रीजन्स रे सरप्लस थिला। ओके फूड वाज सरप्लस तो पठाई पार थांता बट जेहेतु एई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव थिला सेटा भी पारना। ओके सो 14 मिनिट्स हमरो मेनली कंप्लीट हे जबो ए सब लेखु लेखु। ओके सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। सो एतरे जोटा कि पर्टिकुलर किछिटा फैक्ट्स अछि सेगुड़ा मन रखिबार अछि जेंति कि 30% कम आपन रेनफॉल हे गला। ओके 55 रे तापरे नेक्स्ट हैला जो कटक रे रेट टा बढ़िला केते की बढ़िला। सो एगुड़ा आपन को किछि पर्टिकुलर फैक्ट्स आपन को सब थरे हम सब पॉइंट आउट फैक्ट दे परबेनी किंतु किछिटा इंपोर्टेंट फैक्ट्स यदि मन रखिबा ताले हमको मार्क्स टिके अधिका मिले, ठीक अछि। एटा हैला आपनकर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट? फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन। Okay, so this is your part 1. What is slum inclusive development? So slum inclusive development गोटे छोटो definition देबे आउ तार किछि characteristics आपण दे परिबे। Okay, will it lead to a sustainable urban development? Discuss. That is second part. Two parts रे आपनकर question divide each. Okay, so let us see. तो एथरे आपनकर कौन आंसर दबार अछि। फर्स्ट पार्ट को आसंतु इंक्लूसिव स्लम डेवलपमेंट कौन? व्हाट इज दिस कांसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्लम डेवलपमेंट? ठीक अछि इंक्लूसिव स्लम डेवलपमेंट रो ओके आगुर जतरे अपन स्लम डेवलपमेंट को देबे तो स्लम डेवलपमेंट कथा कहउची आगुर कांसेप्ट सेटा कोन स्लम्स को केमती ओके आपण एलिमिनेट कर देबे, ठीक अछि रिलोकेट कर देबे इरेडिकेट कर देबे कांसेप्ट से आथिला कि सिटी रे स्लम होबा कथा न, ठीक अछि दैट वाज द अर्लियर कांसेप्ट। एबे किंतु कहउची ना ताकू बाहर कर दियोनी, ठीक अछि इरेडिकेट कर दियोनी रिलोकेट कर दियोनी बट ताकू इंटीग्रेट करो। ओके इंटीग्रेट करो आपनकर जो अर्बन सिस्टम अछि ता भीतर। ओके so the slums have to be an integral part of the city system, ठीक अछि it has to be integral part of the city system सेटा आपण कहउचंती ओके slum inclusive development, right? Slum inclusive development is basically that part. Okay तो slum inclusive development रो characteristics किछि आपण लिखिबे से जो कहउछ व्हाट इज स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो सेतरे कैरेक्टरिस्टिक्स आपण किछु दबा पड़ियो। तो कोन कैरेक्टरिस्टिक्स रहइबो तो फर्स्ट तो हला आपनकर ओके तो एठी प्रथम पॉइंट लिखि दियंतु स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पॉइंट 1 जोटा में लिखुछु slums are integral part of the urban ecosystem। तो एटा सबटू फंडामेंटल चेंज जोटा आछि स्लम आपनकर रिलोकेशन इरेडिकेशन ताकू न यूज करिकि स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट आपण कहउछ। ओके सो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन
ए स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो मुझे देखो SID लिखुची स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो प्रथम है आपण बेसिक ओके जोटा इंफ्रास्ट्रक्चर आपणकर अच्छी सेगुड़ा आपन को प्रॉपर करने पड़ो जमती कि आपणकर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक क्लीन वाटर को तांको एक्सेस देवा पड़ो सैनिटेशन इलेक्ट्रिसिटी ओके हाउसिंग एगुड़ा सब आपण को स्लम डवेलर्स जो माने अच्छे प्रोवाइड करिया पड़ो तांकर जो लिविंग कंडीशंस अच्छी सेटा केमती इंप्रूव हम ओके हेल्थ तांकर जो स्लम रे गोटे बड़ प्रॉब्लम है हेल्थ रिस्क हरिका सो से रिस्क गुड़ा केमती कमी so improvement of basic infrastructure सेटा आपनकर फर्स्ट पॉइंट अपन एथर लिखिबे ओके improvement of basic infrastructure improvement of basic infrastructure तापरे आउ कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रहइबो सो जॉब पई कि अलगा किछि बिजनेस पई ओके तांकू opportunities मिलिया कथा so access to economic opportunities this is also very important access to economic opportunities access to economic opportunities ओके तापरे आउ कोन कोन रहइबो कि जहाँ आपण डेवलपमेंट करिवे से स्लम रे तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली सेटा डिसाइड करिवो प्लस सेठी जो लोक माने रहउचंती ओके तो तांकर पार्टिसिपेशन भी दरकार ताले से माने भाबिबे हां एटा हम निजरो जिंसो आमे नो हमरो डेवलपमेंट रे हमरो भी कंट्रीब्यूशन रहउची सो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग और गवर्नेंस सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट दैट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट इन स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड गवर्नेंस सो नेक्स्ट पॉइंट लिखंतु participatory and governance participatory planning and governance ठीक है जी तापरे आउ कोन व्हाट एल्स अच्छा सेमन जो रहिबे समस्त सेठी एते पैसा नथिबो कि से माने किडी की रहिबे सेठी तो से माने जो जगह रे एज टेनेंट्स रहिबे ताकर सिक्योरिटी दरकार आउ से रेंट करिका भी अफोर्डेबल हेतिबा दरकार सो अफोर्डेबल हाउसिंग एंड टेन्योर सिक्योरिटी सेटा भी इंपोर्टेंट न से जो गुंडा और माफिया लोक माने सेठी हैरान करिवे तांको ओके सो affordable housing and tenure security affordable housing and tenure security ठीक अछि that is also needed तापरे आउ गोटे इंपोर्टेंट जोटा कि हम फर्स्ट रे लिखिथिलु बट एटा आउरी गुरुत्व सहित कहया पड़ियो केना एटा वन ऑफ द मोस्ट essential infrastructures or essential services they have to have access to सेटा कोन education और healthcare so access to education and healthcare although it is covered in point number 1 still आपण author ताको लिखि परिबो okay access to education and healthcare okay so एगुडा किछिटा केना 14 minutes अछि so more or less आ ऊपर सब गोटे गोटे लाइन लिखु लिखु मोर 7 minutes okay हे जिवो now second part of the question जहाँ से पचाउछि that is
will this lead to sustainable urban development? Will this lead to sustainable urban development? Okay, so slum inclusive development and sustainable development, ता relationship टा how it will lead to ता माने आपण को से points गुड़ा discuss करिवार अछि, how it is going to lead. Okay, तो first तो हला कि एटा inequality को reduce करिवो, it will reduce urban inequality. Okay, सेटा first जिंस, right? So number one, it reduces urban inequality. Okay, तापर आप कौन रहला reduces urban inequality, सेटा हमें गोटे देखिलो. तापर health, public health को improve करिवो, so it improves public health. Overall आपण गोटे example दे परिबे, भुवनेश्वर रे जो slum development करिका सब होई छि, ताका housing करिका एडा सब दे आइछि. ओके, जागा मिशन आपण कहि परिबे. तापर आउ गोटे कोन हला, जदि आपण नेशनल लेवल रे तो धारावी रो एग्जांपल दे परिबे. ठीक अछि, सब पॉइंट्स रे एग्जांपल तो दरकार नै, एग्जांपल टा लास्ट रे देबे. ओके, नेशनल रे धारावी दे देबे और एठी स्लम डेवलपमेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा रो गोटे दुटा दे परिबे. ठीक अछि, सो नेक्स्ट हला तार ओके improved public health, because health is a major issue in slums. तापर आउ कोन, what else? अच्छा, स्लम जदि आपणकर इंक्लूसिव स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करछंती, आमे जो कहल ताको एक्सेस दिया हबो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को, ताले कोन तार फाइनल रिजल्ट टा कोन हबो, से स्लम रो जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी अछि सेटा बढ़ी जिवो. सो इट विल एनहांस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी. ताको इंफ्रास्ट्रक्चर रो छोटो फैक्ट्री रो ब्रेड फैक्ट्री टा करा, तो एम्प्लॉयमेंट तो दबो. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िबो, सेठिकार सराउंडिंग्स टा भी आउ बेटर हबो. ओके, सो enhanced economic productivity, right? Enhanced economic productivity. Okay, तापरे आउ गोटे कोन ना एनवायरमेंटल इंपैक्ट जोटा होची, जदि आपण स्लम को अपग्रेड करूचंती, ओके, ताले सेथरे आपण को किछिटा स्टेप्स नबर अछि. जनरली नि होवे स्लम अपग्रेडेशन किंबा स्लम डेवलपमेंट रे, जेमति कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हे गला, वेस्ट मैनेजमेंट हे गला. ओके, आउ जो सब घर बना हबो ग्रीन बिल्डिंग टेक्निक्स यूज हबो सेथरे. सो ओवरऑल एटा कोन ना एनवायरमेंटल इंपैक्ट डेवलपमेंट जोटा हुए ताको रिड्यूस करिवो. सो नंबर 3 नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखि परिबे, रिड्यूस्ड. नंबर 4 सेटा रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट. ओके, तापरे आउ कोन एतरे पॉइंट्स होई परिबो, सोशल इंक्लूजन अपन इंक्रीज करिवो. सो इंक्रीज्ड social inclusion, increased social inclusion. Okay, increased social inclusion. तापरे जेहेतु आपण ग्रीन प्रिंसिपल्स रे घर घरिका बनै चंती, ओके,
प्रॉपर तार मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट ये सब सिस्टम करके आपण बनैछंती तेणु डिजास्टर्स बेले रेजिलियंस आपनकर अधिक हबो ओके सो एनहांस रेजिलियंस टू डिजास्टर्स to disasters आ कोन पॉइंट्स रहबो एतरे सो जो लैंड टा अछि स्लम लैंड से लैंड सेटा कना सिटी रे अछि प्राइम लैंड टा तार वैल्यू बहुत अधिक तो तार प्रॉपर यूज हे परिबो एफिशिएंट लैंड यूज ओके स्लम्स जो माडी बसी की थांती सब माफिया ए लैंड पा ही थांती सब राइट सो एफिशिएंट लैंड यूज ओके एफिशिएंट लैंड यूज नेक्स्ट अच्छा गोटे मेजर इशू थाए कोन स्लम्स रे सेफ्टी और सिक्योरिटी रो प्रॉब्लम्स थाए क्या सेता तो एमती गोटे ऑर्गेनाइज्ड की गोटे प्लान्ड वे रे हिनी अनप्लान्ड वे रे ही थाए तेणु स्पेशली वुमेन मानकर सेफ्टी सिक्योरिटी सेटा गोटे बड़ इशू थाए सो एथरे कोन होगा ना जदि आपण स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट करूचंती तो तांकर सेफ्टी और सिक्योरिटी और इंप्रूव होबो सो इंप्रूव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी improve safety and security ठीक है तापरे आउ कोन what are the other things okay जोटा की sustainable development को आपनकर हेल्प करिवो राइट जोटा की आपनकर next point that you can take that is governance टा better हबो केने ऑलरेडी आपनकर प्लानिंग अछि आपनकर ऑर्गेनाइज्ड वे रे आपण बिल्डिंग्स करचंती ग्रीन कोड फॉलो करचंती ठीक अछि तो गवर्नेंस टा भी आपनकर बेटर हबो स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट रे ओके जेहेतु हम फर्स्ट देखिछु आपण पार्टिसिपेटरी प्लानिंग और मैनेजमेंट यूज करिवे तो से स्लम रो लोक माने भी गोटे पार्टी रहिबे से माने भी इन्वॉल्व हेबे ओके तो तांको भी लागि हां एटा आमो पई हमरो भलो होची और हमरो डिसीजन भी एतरे अछि okay so that is better governance next point better governance okay so that is your better governance तापर next जदि स्लम रीडेवलप हैला आउ इंटीग्रेट हैला ताले सेठिकार वैल्यू बढ़ी जीवो तो प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज हबो ठीक अछि सो इंक्रीज इन प्रॉपर्टी वैल्यू okay so this will be another point आउ कोन पॉइंट हे परिबो सो सेठी जो पोवर्टी अछि जेतो आपण ताको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देले हेल्थ एजुकेशन ए सब इंस रहला तो सेठी जो स्लम रे जो पोवर्टी लेवल अछि नॉर्मली इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेटा कमिबो सो रिड्यूस्ड अर्बन पोवर्टी ओके रिड्यूस्ड अर्बन पोवर्टी आउ कोन पॉइंट्स रहबो ना सपोज आपणकर से स्लम रे ओके तो लोक माने चाकरी पाइले से माने तांकर यू नो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हैला ठीक अछि तापरे जो डिसीजंस निया होची तांकर स्लम विषय रे सेथरे से माने भी इन्वॉल्व अछि ओके से माने भी इन्वॉल्व अछंदी सो तांको भी गोटे सेंस ऑफ ओनरशिप आसीबो सो इट प्रमोट्स कम्युनिटी ओनरशिप ताहले कोन ना किछि गोटे असुविधा हले से माने निजे आगु आसी की सेटा स्टॉप करे ओके सो it promotes community ownership okay
promotes community ownership. ओके जेमती कि देखो धारावी रिडेवलपमेंट होची हजार हजार कोटी टका से खर्च होची एंड रिसेंटली अपन जानथिबे सेठी एते लोक काम करिया पे जाउछथि तो तांको छोट पिला को छाडिबे को सो सेठी गोटे एनजीओ को प्रोजेक्ट दिया आइछि तो सी कोन करछि ना से धारावी सारा अराउंड 20-30 क्रीचेस से माने खोलछन ठीक है जने आंगनवाड़ी केंद्र रे टिके सेटा प्राइवेट गोटे एनजीओ को दिया आइछि ओके जोगडा गवर्नमेंट ताको पे करछि और इमान तांकर पिला मन को सेठी रखुछन्ती ओके प्रोफेशनली मैनेज्ड तेणु सेतरे कोन होछि ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी सेतरे बे आसुछि okay so if the slum inclusive development is there then private investment will also be attracted ठीक है so एनजीओ भी लाभ होछि right so it attracts if the slum is properly developed okay ताले it will attract investments private investment को attract करिवो so or generally any sort of investment सेटा सेथरे आसी परिवो ओके बट तापई कोन ना इट हैज टू बी वेल मैनेज्ड धारावी रे केते प्रॉब्लम्स थिला केते करप्शन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स वे देयर बट आस्ते आस्ते सेटा ठीक होछ ओके सो तापरे ए जो आपनकर फर्स्ट रो हमें देखिलो इनइक्वालिटी कम हैला सो सिटी बिकम्स मोर इक्विटेबल हैव और हैव नॉट को भितरे ओके आपनकर कमी जीवो जगहटा राइट इन भुवनेश्वर इफ यू सी बहुत गुडे जगह रे गवर्नमेंट तांकर बड़ बड़ प्रोजेक्ट्स करछि जेंति कि हमर घाटिकिया पाखापाखि देखिए सेठी बड़ बड़ अपार्टमेंट टाइप रो सब कराई जोड़ा कि तांको दिया हबो स्लम ड्वेलर्स माने को रिलोकेट कराबो सेठी की ओके सो ओवरऑल इन दिस वे इट विल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द सिटी ओके आ भीतर मते 7 मिनिट रे लिखियार अछि हम कि 8टा 9टा खंड पॉइंट्स लिख सालुनी ता भीतर 7 मिनिट्स से लिखि परिबी ठीक अछि सो दिस वाज योर question number 3. Now come to question number 4. Do you think sustainable development goal targets are achievable? First point. Do you think? Okay. If yes, how we are going to achieve it? First point. How you are going to obviously so no to kohi okay. So eta first. How you are going to achieve the sustainable development goals? And what are the obstacles or the challenges to achieve it ए दुटा जिंस लिखियार अछि ओके ता ऊपर ही आपन को फोकस करिवार अछि राइट एसडीजीज ऊपर ओके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऊपर क्वेश्चन टा अछि राइट सो फर्स्ट हला कि डू यू थिंक दैट ओके इट विल बी पॉसिबल सो फर्स्ट सेटा यस आपन कहिबे ठीक अछि जदि यस कहउचंती ताले कौन से पचरछु आपन को इफ यस हाउ आर वी गोइंग टू अचीव ओके सो यस जदि मु करूछु मते टिके भी एटा लिखि दबा कथा कि काहे की यस होछि ओके सो यस बिकॉज़ सो रीजंस फॉर योर ऑप्टिमिज्म आपन दे परिबे कोन कोन ना फर्स्ट तो हला एटा गोटे कोनोसी कंट्री रो निजर ओके इंडिविजुअल एम नो एटा ग्लोबल कमिटमेंट सबु कंट्रीज चाहउचंती सेटा हो सो फर्स्ट आपण देखिबे इट इज ग्लोबल कमिटमेंट ग्लोबल कमिटमेंट ओके ऑल कंट्रीज आर ट्राइंग फॉर इट तेनु काहे कि न होबो ठीक अछि हां किछि प्रॉब्लम्स अछि को कंट्री पाकर पैसा नाही को कंट्री पाकर एबे क्राइसिस रे चलीछि सेठी युद्ध चलछि लीडरशिप रो अभाव अछि बट मेनली एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल एवरीवन एग्रीज ओके आउ काहे कि परिबो ना टेक्नोलॉजी बढ़ुछि और टेक्नोलॉजी जदी बेटर होछि ताले कॉस्ट भी कमिबो एठी गोटे एग्जांपल अपन देई परिबे जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी अछि ओके सो सोलर पावर रो कॉस्ट वर्ल्ड वाइड 89% डिक्रीज करी गलानी 2010 रे जातिला 2024 रे जाउछ ओके जदी 100 टका थिला सो 89%
इट हैज डिक्रीज्ड माने एबे 11 टंका रे आपन सेटा मिलुछ जो जिनसरा 100% थिला ओके 100 टंका थिला एबे 11 टंका रे मिलुछ as compared to 2010 तो सेटा भी से पॉइंट्स गुडा अपन लिखि परबे केना खाली बेसिक्स गुडा लिखिले भी हबनी किछटा डाटा हमको दवा पे पड़ी सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जेहेतु टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होउची हमें कहि परिबा कि हां एटा हमें 2030 भीतर कंप्लीट कर परिबा सो सेकंड हला एडवांसमेंट ओके एटा हला सेकंड रीजन काहे कि हमें भाबुछु कि ओके इट इज अचीवेबल तापरे आ गोटे कोन ना आगुरु कोन लेवल ऑफ अवेयरनेस एट द नेशनल लेवल एंड एट द पॉपुलेशन लेवल सेटा कम थिला एबे केम दूसरा बहुत बढ़ी गलानी सो इंक्रीज अवेयरनेस आपनकर अछि राइट सो इंक्रीज्ड अवेयरनेस आपनकर अछि आ कोन रहबो what are the other reasons for which we are optimistic that এটা ହେଇଯିବ possible तो एटा खाली तो गवर्नमेंट माने करनांती ना एटा प्राइवेट सेक्टर भी करछि सो प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट भी एथरे अछि ओके सो नेक्स्ट हला प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट ना पैसा तो तांको पाखरे बेसी अछि ना प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट ओके सो एगुडा आपण कहि परिबे कि these are some of the reasons why we are optimistic that एटा हेई परिबो ओके तो ए सक्सेस टा आपण अचीव केमती करिवे सेटा हला आपनकर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन okay that is the second part of the question जोटी कि आपण पचौछि if yes how you are going to achieve okay so achievement आपण केमती करिवे how to achieve so first तो हला हमें ऑलरेडी देखि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अछि ओके तो मेन जिंस एटी कोन दरकार ना पैसाटा ओके इन्वेस्टमेंट दरकार so we have to increase the investment so increased investment सो एठी हमर फैक्ट कोन लिखिबार अछि गोटे फैक्ट आपण दे परिबे कि यूएन रो कैलकुलेशन हिसाब रे वर्ष को प्राय हमको 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करिया पे पड़िबो सो दैट by 2030 SDGs सबु हमें ओके अचीव कर पारे व्हिच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स पर एनम हैला सो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू द ट्यून ऑफ 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स पर एनम सेटा भी जदी अपन चाइमे लिखि परिबे अकॉर्डिंग टू यूएन 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स पर एनम गरीब देश तो दे परिबेनी ता माने कोन ना धनी देश को कंट्रीब्यूट करिया पड़ियो से माने सेटा एते इंटरेस्टेड होना फॉर एग्जांपल अमेरिका ट्रम्प का अंडर रे सब दिन सरु बाहरी गला ओके एबे किछि कि जेर माने इट हैज रिटर्न बट देन सेमिति फंडिंग से करूनी ठीक अछि तापरे आउ कोन ना देयर हैज टू बी पॉलिसी कोहेरेंस सब देश जदि गोटे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हबो समस्त गोटी डायरेक्शन रे पॉलिसी बनेबार अछि सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 आपनकर हला policy coherence should be there किछटा गवर्नमेंट करूथिबे किछटा देशर गवर्नमेंट करू नथिबे ताले कोन you will travel in different directions how it becomes very difficult to achieve this goal by 2030 okay तापर आउ कोन collaborations and partnerships region level रे अपन आउरी collaborate करिवे partnership करिवे you can take the example of international solar alliance ठीक अछि आउ भी बहुत एग्जांपल्स नै परिवे सो नेक्स्ट हला partnerships and collaborations
पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस बुझिपारे तापरे आउ कोन कोन रही परिबो तरे व्हाट आर द अदर थिंग्स that will ensure that we can achieve it तो जो छोट कंट्रीज जोड़ा अच्छा कि पुअर कंट्रीज अच्छा मार्जिनालाइज्ड कंट्रीज अच्छा तांको हमको हेल्प करिया पड़िबो सेमन त पाखे ताको पाखे निजे रिसोर्सेस नाही ताको छाड़ी भी हबन ओके सेमन जदी क्लाइमेट चेंज बेसी करिवे ताले एसडीजीज भी किछ लाभ हबन सो एम्पावरमेंट ऑफ दिस मार्जिनालाइज्ड ग्रुप्स ओके एडा कंट्री लेवल रे भी और सोसाइटी रो लेवल रे भी आपण करिवार अछि कंट्री लेवल रे पुअर कंट्रीज हे गले सोसाइटी लेवल रे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हेले जेंति कि वुमेन हे गले यूथ हे गले इंडिजिनस ग्रुप्स हे गले ट्राइबल्स इन इंडिया अबॉर्जिन्स इन ओके ऑस्ट्रेलिया तो से माने रहले सो एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड नेशंस एंड ग्रुप्स ठीक है आउ कोन कर परिबे आपण ना देयर हैज टू बी behavioral change among the masses okay that is sustainable consumption and sustainable production okay so consumption pattern और production pattern रे change होगा दरकार ठीक है सेटा केमती चेंज हो जदी इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज हो एज अ रिजल्ट कलेक्टिव बिहेवियर विल चेंज ठीक है सो वेस्ट को आपण रिड्यूस करिवे जो 4 आवर्स हमर अछि ओके सर्कुलर इकोनॉमी वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेमती कि वेस्ट ही आपण किछि क्रिएट होबन राइट सो एई सब जिंस हम करे पड़ियो सो बिहेवियरल चेंज एटा इंडिविजुअल टू स्टार्ट हेले कलेक्टिव चेंज होबो तापरे नेशन लेवल रे ओके चेंज होबो सो these are some of the ways through which we can achieve it okay next question कौन पचारथिला थर्ड टा कि what are the obstacles to achieve it से if not पचारछि से if ता माने या नो कि मु जदी नो कहबी ताले obstacles लिखिबी और yes जदी कहबी how to achieve okay सेटा नो आपन को पूरा सब गुडा दबा पे पड़िबो राइट सो नेक्स्ट हला obstacles ठीक अछि कि इश्यूज कौन प्रॉब्लम्स अछि फर्स्ट तो पैसा रो प्रॉब्लम ऑब्वियस कथा 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स वर्ष को दरकार पैसा दबो कि गरीब देश तो पारिबेनी ओके तो जोड़ा डेवलप्ड कंट्रीज अच्छे रिच कंट्रीज अच्छे से देखिए पड़ो से भी मना कर ओके सो नंबर 1 बिग प्रॉब्लम सेटा रहा लैक ऑफ फंडिंग लैक ऑफ फंडिंग ठीक है तो सो फंडिंग नहले ऑब्वियसली स्पेशली द पुअर नेशंस दे हैव टू बी लेफ्ट आउट से माने कौन से किछ कर परियन ओके तो जोड़ा में देखिलु 5 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स पर ईयर आपन को दबे पड़ियो so that is not possible for all countries they have to be helped if they cannot be helped SDG fulfill होबा difficult तापर आउ गोटे मेजर प्रॉब्लम कोन होची ना क्लाइमेट चेंज जोगु more and more people will go below poverty line ताकर हैबिटेट्स करिका ताकर लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो so you take the example of atolls of Maldives तो सेठी जो atolls अछि सेटा बुडी जिवे से लोक कोडी जिवे ताले से ताकर जहा पोजीशन घर इमूवेबल पोजीशन छाडी कि तंग कोडी जिवे पड़ियो तो दे विल बी पुश्ड टू पॉवर्टी ओके तो क्लाइमेट चेंज जो जदि तद आपण कि स्टैटिस्टिक्स से थरे दवा पे चाहउचंती ओके सो बाय 2030 100 million people will be pushed into poverty okay because of climate change 100 million by 2030 तो पुणी ताको बाहर करके पड़ियो तो एसडीजी से कॉम्प्रोमाइज हे गला ओके एटा हला सेकंड पॉइंट दैट इज क्लाइमेट चेंज
तो जदि डाटा ता रखिया भी चाहते लिखि दे परिबे सेटे by 2030 100 million people will be forced into poverty due to climate change. पुणी आंको उत्थान पुणी करिया पड़ियो, राइट? तो again it will be very difficult to finish it by 2030 आपण अचीव करियो. तापर मेजर आउ गोटे बड़ प्रॉब्लम हेगला कोन? वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ये तो बढ़ी चलची. ओके, ये जो आपण लेबनान सीरिया एगुडा देखछथि, ये रिलेटिवली कंट्री गुडा माने गरीब देश नो, दे आर नॉट लाइक सोमालिया. ठीक ठाक देश तांकर पैसा पत्र थिला, बट ड्यू टू वार नाउ ताको अवस्था पूरा खराब. Prolonged war जदि लागी रहिबो, you see what is happening in Ukraine. Ukraine was a it was not a poor country. ठीक अछि. तेनु आउ ए कॉन्फ्लिक्ट जोन्स ना बढ़ी चललेन. ओके, मिडिल ईस्ट रेला एबे पुनी ईरान भी सेतरे इन्वॉल्व हे गलानी, बड़ बड़ पावर्स इन्वॉल्व हेलेन. इजराइल रो भी इकोनॉमी इज अफेक्टेड. ठीक अछि. सो वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट जदि चलिबो तो रिसोर्सेस सब वार्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को जिवो प्राय. ताले आउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखिया भाई हम पाखो पैसा नथिबो, रिसोर्सेस हम पाखे नथिबो. सो कॉन्फ्लिक्ट्स, वार्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ए सब बड़ प्रॉब्लम. ओके, तापरे नेक्स्ट आसिला आपनकर इनइक्वालिटी. Very rich countries, very poor countries at the national level and at the people to people level we say difference ta roch. So next hela inequality, both at individual and societal level and at the national level. तो जा पाखे नहीं सी एक्सपेक्ट करची कि मो पाखे तो नहीं आउ जा पाखे अछि सी मते किछ देबो. सो अगेन सेथुर भी कॉन्फ्लिक्ट आउछ. आउ लास्ट है पॉलिटिकल विल, जमती कि ट्रम्प से डायरेक्टली कहते क्लाइमेट चेंज किसी नो, इट इज बेसिकली ए फार्स, पैसा आडू साडू एपट सेपट करने पे. ओके, ही डज नॉट रियलाइज दैट कि आउ भी बहुत जन सेमती अच्छा. सो से देशर पॉलिटिकल लीडरशिप रो पॉलिटिकल विल. ओके, दीज विल बी मेजर ऑब्स्टेकल्स. ए ऑब्स्टेकल्स को पास करिकी हमको मेनली ओके एसडीजीज केमती हमें अचीव करि परिबा बाय 2030, राइट? लास्ट क्वेश्चन को आसंतु ग्रुप ए रो. तो आम आज खाली ग्रुप ए टा देखिबा. ग्रुप बी रे 12टा क्वेश्चन अछि, जो थरु 10टा आपन करियर अछि. तो बेसिकली आई विल टेक 2 सेशंस फॉर दैट, काहे ना हमें डिटेल्स रे जाउछु, एमति नै कि अल्प अल्प जदि कर दे पड़े ताले घंटे 2 घंटे कंप्लीट हे जिवो. तो मो आउ दीटा सेशंस नेबी, से जो 12टा क्वेश्चन रहला सेटा हमें डिटेल्स से देखिबा. तो एटा पुनी अगेन आउटलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ भितरकनिका नेशनल पार्क. सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस जदि मु आउटलाइन करिवि मते टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंस हिसाब रे देखिया पे पड़िबो. तार इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कोन तार, ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी सिग्निफिकेंस कोन. ठीक अछि, ए सब जिंसो मते देखिया पे पड़िबो. सो लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रुप ए. ओके, दैट इज रिगार्डिंग योर भितरकनिका. तो फर्स्ट जिनस है आम बायोडाइवर्सिटी आउ कंजर्वेशन एस्पेक्ट देखीदबा. ठीक अच्छे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एस्पेक्ट. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एस्पेक्ट. तो फर्स्ट पॉइंट से तो लिखन ताले दैट इज बायोडाइवर्सिटी, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी जदि हमें पॉइंट्स देखिबा ताले फर्स्ट कोन ना, it is the second largest mangrove ecosystem in India, Sundarbans pare. Okay, so second largest mangrove ecosystem in India, second largest mangrove ecosystem in India. और मैंग्रोव्स रो लाभ हमें साइक्लोन बेले भी देखिलु. ठीक अच्छे, सो
ऑलमोस्ट जदि आपण सेठरे आउ डिटेल्स लिखिबे ताले कोन अराउंड मोर देन 600 स्क्वायर किलोमीटर्स रो सेटा ओके आउ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज सेथरे रहउछत बिकॉज ऑफ दिस मैंग्रोव बायोडायवर्सिटी आपण को रहउछ ओके जोटा सेकंड पॉइंट आपण लिख परिबे दैट इज मैंग्रोव डायवर्सिटी ओके तो मैंग्रोव डायवर्सिटी रे कोन आपण लिखिबे कि सेठी मोर देन 62 ओके मैंग्रोव स्पीशीज आपनकर अछि राइट आउ जदि एग्जैक्टली भी आपण लिखि परिबे ता भितरु को कोटा इंपोर्टेंट ओके लाइक द हेरिटेरा फॉर्मेस ओके तो सेगुडा भी देख परिए एंडेंजर्ड वंस जोड़ा एंडेंजर्ड मैंग्रोव्स ओके सो मोर देन 62 species of mangroves okay more than 62 species of mangroves आपन को मिलुचे थे तापरे आ गोटे कोन क्रोकोडाइल ओके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सैंक्चुरी अछि सेठी सो पॉइंट नंबर 3 तापरे नंबर 4 आ कोन एथरे आपण बायोडायवर्सिटी अंडर रे काहे कि सेटा बायोडायवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट so obviously that is the olive riddle turtle breeding ground okay so olive ridley turtle मो ओआरटी लिख दउची ब्रीडिंग ग्राउंड okay ठीक सेमती lot of birds are also there 215 bird species रू ऊपर आपण पाउचंती सेठी भीतर कानिका okay so next is it is a paradise for the birds so avian paradise okay 215 species रू अधिका ओके सेठी जो ऑप्शन माइग्रेटरी बर्ड्स करिका भी ओके तो बायोडायवर्सिटी रे सेटा आपण ऐड करि परिबे राइट आ से यूरोप रो ऑप्शन सेंट्रल एशिया रे ऑप्शन ठीक अछि सो सेटा आपण आ तार एग्जांपल्स आपण दे परिबे ओके लाइक कॉर्मोरेंट्स करिका गले ठीक अछि तो दे आर आल्सो कमिंग एंड अदर एग्जांपल्स यू कैन गिव ओके तो एटा गला biodiversity why it is important from the point of view of biodiversity tapare next you come to what is its okay ecological significance ecological significance तार कोन so ecological significance रे आपनकर फर्स्ट तो एबे जहां में देखिलु कि कोस्टल प्रोटेक्शन सेटा करूची राइट सो जो मैंग्रोव्स उडा गोटे नेचुरल बैरियर अगेंस्ट साइक्लोन्स स्टॉर्म सर्ज करिका हला इरोजन कोस्टल इरोजन हला तो कोस्टलाइन को प्रोटेक्ट करूची ओके सो पॉइंट नंबर 6 कोस्टल प्रोटेक्शन आउ कोन होची व्हाट एल्स कैन यू राइट आउ कोन पॉइंट्स अपन लिख परिबे दैट इज गोटे कार्बन सिंक हिसाब रे सेटा भी काम करूची ओके सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अपन लिख परिबे right so they act as carbon sinks तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट ओके तापरे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तो मैंगो जो आपनकर ट्रीज अच्छी मैंग्रोव नेटवर्क रो जो रूट्स उडा ओके
तो सेटरे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आउ से एंटायर इकोसिस्टम टा हाईली रिच एंड प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ दैट. सो नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. जहाँ गोटे मैंग्रोव सिस्टम रो एडवांटेजेस रोची से गुड़ा आपण लिखि परिबे. ठीक अछि. नेक्स्ट, it also supports fishery, तो सेठिकार जो livelihood of the local population जे सेठ रहउछन. ओके, सो fishery support, ओके, जोटा कि सेठिकार livelihood को भी सपोर्ट करूछ. तो एगुड़ा है गला आपनकर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तार, राइट. इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. तापरे नेक्स्ट इंपोर्टेंट हैला कंजर्वेशन. ओके, conservation from significance from conservation point of view. So conservation हिसाब रे जदि आपण देखिबा कोन पॉइंट्स आपण दे परिबे, तो इट इज अ रामसर साइट. ओके, वेटलैंड्स रो. सो नंबर 1 रामसर साइट. राइट. तापरे it is also a wildlife sanctuary, right. भितरकनिका नेशनल पार्क ता पाखरे भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा भी अछि. ओके, सो अगेन इट फर्दर एनहांसेस प्रोटेक्शन आउ से जो जगार बायोडायवर्सिटी ताको आउरी ओके से कंजर्व करूची. सो नेक्स्ट से पॉइंट टा भी दे परिबे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जोटा कंजर्वेशन अंडर में दे परिबा आर देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स. ओके, इंक्लूडिंग जोटा क्रोकोडाइल्स को पाई हला, टर्टल्स को पाई हला, एंड community based mangrove restoration. So conservation programs. Okay, so conservation programs. Next, इटा में देखिलु तार कंजर्वेशन साइड. नाउ सोशियल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी तार बहुत रोच. सेठिकार जो लोकल पॉपुलेशन, ओके, दे डिपेंड ऑन देयर लाइवलीहुड्स. ओके, प्लस सोसाइटी टा सेठी जेमति इको टूरिज्म हे गला सेथरे भी से माने बेनिफिट पाउछन, राइट. सो सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की सोशियो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस सेटा नेक्स्ट अपन दे परिबे. सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो सेथरे फर्स्ट हैला इको टूरिज्म. सो बहुत सेथरे स्कोप अछि इको टूरिज्म रो. आउ इको टूरिज्म पॉइंट्स भी सेथरे बहुत अछि जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन इट अप. ओके, भितरकनिका रे. तापरे लाइवलीहुड सपोर्ट. ठीक अछि, लाइवलीहुड सपोर्ट सेठी जो माने लोकल्स माने अछंती फिशरीज हला कि अदर थिंग्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हला रिलेटेड टू द भितरकनिका इकोसिस्टम. ओके, फिशिंग हे गला, इको टूरिज्म हे गला. ओके, और रिलेटेड एक्टिविटीज तार लोकोडा आसी रहिबे इको टूरिज्म रे. तो पुनी अदर यू नो जोटा कि हमर एंसिलरी ताको फैसिलिटीज दरकार हो सेठी लोकल्स माने भी बेनिफिट करछन. आउ गोटे बहुत
इंपोर्टेंट तर नाटा भीतर कनिका कहीं पड़ला तार हिस्टोरिकल रीजन से जो डायनेस्टीज अच्छी ओके कनिका डायनेस्टी कनिकाराज डायनेस्टी जो तो देयर आर लॉट ऑफ एंशिएंट टेंपल्स से सब जगह रे सम ऑफ देम आर प्रोटेक्टेड सम ऑफ देम आर माने डेवलप्ड स्टेट रे अछंती आउ से जगह कल्चरल वैल्यू भी बहुत अच्छी ओके जहाँ आम इकोलोजी रू देखीदेलु कंजर्वेशन एनवायरनमेंट बायोडायवर्सिटी से सब देखिलु बट एंशिएंट ओडिया कल्चर को भी जदि आम देखिबा तार भी गोटे वैल्यू अच्छी तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी अच्छी भितरकनिकार ओके तो लास्ट पॉइंट सेटा दे परिबे दैट इज कल्चरल significance and historical significance. Okay, so cultural or historical significance, right? The ancient temples, okay, and lot of archaeological remains karika भी सेठी अछि, okay, which was सेठिकार जो major dynasty, for example the Kanikaraj dynasty थिला, okay. Okay, and other dynasties से area जो में थे तो तारा कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी अच्छी सो सी पचार आपको क्वेश्चन रे कि भितरकनिकार सिग्निफिकेंस आपण कोन तो आमे डिफरेंट एस्पेक्ट्स तार इंपोर्टेंस ता देखै पारु बायोडायवर्सिटी इकोलॉजिकल कंजर्वेशन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल ओके सो एटा हमरो सेक्शन 1 किंबा ग्रुप ए रो सरीला ठीक है so this pdf you can just take it down or you can download from our telegram channel okay सबले देखिबे पॉइंट्स केते आपण अधिका दे परिबे गोटे पॉइंट को बेसी एक्सप्लेन करा दरकार नहीं मैक्सिमम वन लाइन रो एक्सप्लेनेशन केबे केबे समय भी नथिबो गोटे लाइन भी लिखिया पे तो माने कोन आपण जोठी पॉइंट ता देबे से पॉइंट रे लाइन लिखि देबे काहे कि सेटा इंपोर्टेंट ओके because we have to give more points सेटा हला जिंस rather than explanation of that चारटा पॉइंट जने सपोज दीटा आपनकर कैंडिडेट्स अछंती जने चारटा पॉइंट दैछंती दीदी लाइन एक्सप्लेनेशन करछंती आ जने सातटा पॉइंट दैछंती प्रथम तीनटा पॉइंट रे से गोटे लाइन एक्सप्लेनेशन करछंती बाकी रे जस्ट खाली से पॉइंट लिखछंती काहे कि से इंपोर्टेंट से गोटे पॉइंट रे लिख दैछंती सो ही विल गेट मोर मार्क्स ऑब्वियसली हला तो सेटा माइंड रे रखिबे अधिक पॉइंट्स हम केम दे परिबा तेनु मु 10टा जानि थिले 7टा लिखिबी 15टा जानि थिले 12टा लिखिबी ओके सो पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ओके मल्टीफेसेटेड आंसर थिबा द ताहले प्रॉपर ता माने बेसी एनालिसिस हमको एथरे करिवार नै ओके सो नेक्स्ट सेशन रे हमें पार्ट बी की जीवा पार्ट बी रे 12टा क्वेश्चन अछि विल डिवाइड दैट इनटू 6 ओके सो दैट हमें इन डेप्थ तारो डिस्कशन कर पारि ओके ता छडा जो माने रेगुलर आंसर राइटिंग करिया पे चाहउछंती तो हमर से बैच टा मंडे रु स्टार्ट होची दैट इज आपनकर अक्टोबर 28 रु तार स्ट्रक्चर कोन होची ना गोटे दिन आगु आपनको टेलीग्राम चैनल रे क्वेश्चंस दिया जाउची आ प्रथम वीक रे प्रथम दि तीनटा क्लास पे मॉडल आंसर से भी दे देबी तापरे क्वेश्चन दिया जाउची मॉडल आंसर दिया जाउची ओके सेटा ऐप रे जनरली रहइबो बट इनिशियली आपनकर टेलीग्राम चैनल रे दिया होची क्वेश्चन सुडा टेलीग्राम चैनल रे सबल दिया हो तो गोटे दिन परे इवनिंग रे 9:30 राति रे जो माने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स ताको पे भी एटा सो वन डे पूरा मिलला आपनको प्रिपरेशन करले राति रे आंसर आपनको लाइव लिखिबार अछि तो सेठी भी आपनको सेटा लाइव राइटिंग रहइबो ओके तो सेथरे आपनको यू हैव टू राइट द आंसर्स लाइव ठीक है सो दैट वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 28 आ सेटा पेपर वाइज हो हमें एई पेपर 1 रु स्टार्ट करूछु पेपर 1 रो फर्स्ट बिट हला आर्ट एंड कल्चर इंडिया रो ओके तो से थ्रू हमें स्टार्ट करूछु आउ ता माने कोन ना आपण गोटे सरीला परे से जिंसटा आपनकर आउ एमती किछि जनरली क्वेश्चन नथिबो जोडा एग्जाम रे पड़ी पारे ओके डायरेक्टली इनडायरेक्टली से थ्रू ही क्वेश्चंस आसी ठीक अछि आउ एटा वर्ष सारा चलियो तो जो माने को गोटे 1 ईयर पूरा माने ईयर राउंड आपनको आंसर लिखिबा पई दरकार ताले यू कैन कंसीडर जॉइनिंग दिस ओके सो विल स्टॉप हियर बेस्ट विशेस बहुत गुडे दिन से एबे आपनकर प्रीलिम्स टा भी शिफ्ट हे गला ओके तो मुंडरे बहुत गुडे दिन
बहुत कैंडिडेट्स को थिबो गोटे जिंस मन रखिबे आपण डिस्ट्रैक्ट हेबेनी ओके सो पीपल विल से कि रिजल्ट बाहरला रिजल्ट भूल एतरे आइची एतरे से आइची व्हाटएवर बी द केस आपण जदि किछि चेंजेस सेतरे करि पाउचंदी पॉजिटिव चेंजेस ताले फाइन ओके अदरवाइज इट इज अ टाइम टेस्टेड सिस्टम एमति तो नो कि आपण को नुवा सिस्टम हे जाइची ओके वर्ष वर्ष दला ए सिस्टम टा अछि सेथरे रिफॉर्म्स दरकार रिफॉर्म्स होची मे बी आपण जो पेस रे चाहुचंदी रिफॉर्म्स टा सेटा न होई पारे से पेस रे न होई पारे बट सिस्टम को दोष दबा ओके सबुटु सहज आपण सेमती एस्केप कर जे परिबे राइट तो एस्केपिस्ट एटीट्यूड रखंतुनी यू प्रिपेयर प्रॉपर्ली ओके जोटा आपण हाथ रे अछि आपण करंतु सेटा हला प्रिपरेशन प्रॉपर प्रिपरेशन कले आपण ए एग्जाम होची कि अलगा केते एग्जाम्स में बाहरची यू विल क्रैक ओके एनी एग्जाम ठीक अछि कोटे एग्जाम आपण क्रैक करिवे सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो में देखिबा आपण करि भी पारलेनी ठीक अछि त ताले कोन अछि किछि से प्रॉब्लम नै आपण 4-5 इयर्स प्रिपरेशन कले सो द नॉलेज यू हैव गेन्ड यू कैन यूज इट समवेयर एल्स डिफरेंट लोको डिफरेंट सिचुएशन रे थांती सपोज जणे तांको यू नो तांको ऊपर फैमिली डिपेंडेंट ही ना तो सी 6टा अटेम्प्ट पे प्रिपेयर करिवे किछि तांको असुविधा नै अगेन सो आउ गोटे पिला जाकू ता फैमिली ता ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करछन सी ता पाखे एते लिबर्टी नै से गोटे दिटा अटेम्प्ट यदि क्लियर कले कले अदरवाइज को गोटे जॉब करी कि तापर तांको तांको ड्रीम प्लस फैमिली रो रिक्वायरमेंट दीटा जाको देखिया पड़ियो तेनु ए जो कंपैरिजन ता हमें करू सी पाइ गला मोबाइल कि व्हाटएवर सेटा कंप्लीटली भूल समस्ते निज निज सिचुएशन रे अछंती आपण ट्राई करूछंती ट्राई प्रॉपर ट्राई करो 2 घंटा भी टाइम मिलछ ठीक अछि बट से 2 घंटा ता बेस्ट आपण जेंती यूज करिवे ओके काहे कि ना आपणकर बहुत गुडे एवेन्यूज अछि समय नष्ट करिया पे आजकल हे गलानी ओके तेनु सेठु टिके दूर रहबे फोकस रखंतु आउ जस्ट डू योर वर्क ठीक अछि एंड लीव द रेस्ट टू गॉड इफ यू बिलीव इन गॉड अदरवाइज एथिस्ट अछंती कि आपण ओके बिलीव करंतनी गॉड रे ताले नेचर ऊपर छाड़ दियन कि से जे पावर जे दुनिया टाको ओके कंट्रोल करछि ता ऊपर छाड़ दियन आपण निज काम ठीक रे करन ओके so don't get swayed away by different things civil service में prepare करछनी माने you stick to your schedule भी एमती बनांतु जोडा की यूटोपियन हे नथिबो जो शेड्यूल टा एक्चुअली मैनेजेबल थिबो मो पाखरे 4 घंटा अछि मु शेड्यूल बनौछि कि मु 5-6 चैप्टर सार देबी गोटे दिन रे इज इट पॉसिबल मुझे सारी भी पारिबी ताले कोन करी त कहि रीडिंग कर देबी किछ लाभ होबन ओके सो एनीवे आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सरिका आस्ते आस्ते डिस्कस करिबा कि केमते हमको आंसर टा लिखिबार अछि ओके प्लस यू कैन थिंक अबाउट द आंसर राइटिंग बैच ओके तो आज ही जोटा कि काली हमर स्टार्ट होची मंडे रे तो आज ही तार क्वेश्चंस आपन को मिल जिवो टेलीग्राम रे और प्रथम 2 दिन रो मु मॉडल आंसर्स भी दे देबी फर्स्ट 2 डेज पर से मॉडल आंसर्स गुडा ऐप रे ही आपन तको पाइ परिबे ओके सो एटा कोन ना लाइव आंसर राइटिंग सो यू आर गेटिंग द क्वेश्चन यू आर गेटिंग द आंसर्स आपन जानिले बट एबे सेटा जानि कि भी सेही 7 मिनिट कि 8 मिनिट कि 10 मिनिट जहाँ भी सेठी दिया हबो काहे कि ना हमें मिक्स्ड करके सेटा दबु ओके ओपीएससी पूरा तो यूपीएससी रो पैटर्न फॉलो करनी जति एई क्वेश्चन रे जणा पडुची 300 वर्ड्स रो भी दउची ओके सो हमें 150 वर्ड्स भी करिबा 250 वर्ड्स भी करिबा 300 वर्ड्स भी करिबा ठीक अछि सो दैट हमको किसी सरप्राइज मिलिबोनी एग्जाम ओके एनीवे सो आई विश यू ऑल द बेस्ट ठीक है प्रॉपर्ली प्रिपेयर करंतु बहुत गुडे पॉइंट्स पे प्रिपेयर करंतु 15टा पॉइंट पे प्रिपेयर कले 9-10टा पॉइंट एग्जाम रे लिखिबे एमति नो कि 5टा पॉइंट प्रिपेयर करबे और सही 5टा ही लिखि दोचे एग्जाम ओके सो कीप दैट इन माइंड ओके सो थैंक यू ऑल नमस्कार